Hello everyone and good morning. Guys, morning. You are able to hear me? Please confirm quickly. Guys, morning. Yes, sir. Good morning. Good Good morning, sir. morning. Morning, sir. We are able to Morning. hear. Morning, sir. Good Morning. morning, everyone. Morning, sir. Morning, Good morning, morning. morning, Good morning, morning. morning. Okay, guys, and welcome to the day 2 of multi-cloud plus DevOps with AI journey. Okay, cool. And as per the agenda, as per the syllabus in the day 2, we have to discuss the fundamentals of the cloud computing. But before going directly into the cloud, I would like to discuss something which is previously or which is the data center, why from the data center we moved into the cloud. Okay, so this many things we are going to discuss in the today's session. Let me share my screen. Okay, and if you are thinking, is sir, what exactly the plan? If you will think what exactly the plan has to be for our syllabus. Okay, so what I'm doing it, I'm going to my website. Okay, in this website, this is very clearly mentioned that we are here for learning the high package jobs, or we are going to crack the high package jobs into the market with the help of Cloud DevOps community. And here in this link, in this roadmap button, if you will click here, there is a roadmap. Okay, this is a roadmap. Here is the roadmap, and according to the roadmap, we are learning. So if you want to bookmark, you can bookmark it so that what will happen, it will be helpful for you by any reason. If you miss any of the class, what exactly we are going to discuss, what are things we are going to plan. So as per the agenda, we are here in the cloud computing. Okay, something related to Visual Studio setup is pending, Copilot setup is pending, we will do it. Okay, AI का पूरा दिन है हमारे पास, हमें वही करना है. Okay, cool. Is that fine? Just type O into the chat box if you're okay in the for this. Okay. Perfect. Thank you. Thanks a lot. Okay. But today we are going to discuss about the cloud computing, virtualization before the cloud, with the servers, with the data center, with the virtualization. What all things are that? This is what we are here for learning. Okay. Now I'm coming here, and this is day 2. Okay, and this all things is the agenda for today. Okay, we have to understand why data center has been failed, what are the problems in the data center, what are the problems has been solved by the cloud, and what exactly the cloud provider, types of cloud, advantage, disadvantage, architecture, how cloud works, physical machine, virtual machine, and then we will move into the cloud, and so many components, characteristics related to the cloud, public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud. This all things we are going to discuss. And the most important part, models of the cloud, SaaS, PaaS, IaaS, and so many. This is what we are going to discuss in the next 1.5 hours. Are you ready and excited? Everyone, everyone. Perfect, perfect, perfect. Thank you, thank you. Thanks a lot. Okay, so अब हम चलते हैं. Okay, just see this image. Just see this. Okay, try to understand. Okay, if possible, try to understand. See, you have to start from your cloud computing basics. Basics में आपको क्या पढ़ना है? Okay, after that, when we are coming to the cloud service models, what we have to learn it. Okay, if you are talking about the providers, हमें कौन से providers के बारे में पता होना चाहिए. Just spend 30 seconds here. Okay, everyone, and just type into the chat box how much percentage you are able to understand in this image. Just, if you are okay for, if you are typing zero, that is also acceptable, because after 1 hour, after 1.5 hour, it will be converted into 100%. Okay, just type what exactly or how much this image you are able to understand. 20%, 30%, 90%, 50%, 30%, okay, 70%, nice, 90%, okay, 50, 60. One of the person is telling 100%. Superb, superb, nice, looks okay, acceptable, okay, whatever you are writing it. Okay, so what I'm doing it, we have to understand this in the entire session. Cool. The most important point, guys, here, models. Okay, when I'm talking about the models, we have to discuss about the 6xAAS models. If you know the names, can you write the names? Just think it and write the names. Just think it and write the names. Just think it. IAS, Abhinav bhai is telling. PAS, okay. SAS, TAS, क्या बात है? आप लोग को names पता है. At least, great. Okay. Yes, this is the actual agenda we have to discuss. Okay. Now, what exactly? Okay. SAS, software as a service, where ready-made things are available. Okay. We will do practical knowledge. Platform as a service, where someone will provide the platform to us. Okay. IAS,
where only infra will be provided to us. Okay, only infra will be provided to us, and on the infra, we will install something. We can create a platform. Over the platform, we can install some application, and completely ready-made application will be created. What exactly the toughest? I can say out of this, IAS can be the toughest. IAS is the main where we can customize as per our requirement. SS we cannot customize as per our requirement. You are getting my point? High level, guys. Yes, no? आ रही मेरी बात समझ में? Yes, no, yes, no. Perfect, 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 perfect. Okay, हम लोग इसी को डीप लेके जाएंगे. Okay, this is the basic. इतना everyone, you are a fresher. If you have a target of job in the next 100 days, definitely भाई इतना तो पता ही होना चाहिए. Bare minimum requirement. Okay, because nowadays this is learning into the colleges as well. Understood? मेरी बात समझ में आई? Practically. Okay. Now, whoever has a, sir, I have a 2+ year experience. Okay. Then you have to be aware about FAAS. मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा FAAS. DS की जगह हम लोग यहाँ पे करते हैं CAAS. Okay. चलो, guys, go ahead quickly. I would like to listen the full form of FAAS from you guys. बोलिए क्या होता है? Function as a Function. service. Function as a service. Function as a service. Right? मतलब क्या? Which service into the cloud? कौन सी service? Let's take an example for AWS. Which service? AWS Lambda. Lambda function, Lambda. serverless. AWS Lambda function. Perfect. Okay. Lambdas are the FAS. What exactly it is? Whenever the required, the function will be triggered. Even on the particular event, the function will be triggered, and the complete, obviously, the infra will be provided to you. Okay. On the time basis, on the requirement basis. Okay. We are going to discuss this in the long way. Okay. No need to worry. Second, I am coming into the CAAS. Full form का नाम बताएगा? What is the full form? Container as a service. कंटेनर एज अ सर्विस. ओके. अब जो भी एप्लीकेशन होगी, यू विल कंटेनराइज द एप्लीकेशन. ओके, यू विल कंटेनराइज द एप्लीकेशन. अब नाउ आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, general question. Okay, if I want to create a container of my application, which software will come into the picture? Software name, application name, tool name. Docker. Kubernetes. 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 नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो. Okay, Docker. if I want to Docker. create a container. Docker. Correct. If I want to create a container, if I want to create an image, then Docker will come into the picture. Okay. Docker will come into the picture. Docker will help us, okay, to create a container. और container को run करने के लिए, okay, we can directly run on the Docker if 1 or 2 or 3 containers or 10 containers are there. But if you have a millions of containers, thousands of containers, which we cannot maintain manually, so we need a container management system, that is Kubernetes. Guys, तो हाई लेवल आइडिया लग रहा है आपको? समझ में आ रही है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय थिंग्स? Yes. Yes. कूल. तो हमें इस पे फोकस करेंगे. ओके, दिस इज व्हाट आवर फोकस एरिया. अब भाई ये दो चीजें, if you're looking for a better package or higher package, okay, so better package, higher package, more than 10 LPA minimum. Okay, तो हमारा फोकस यहां से स्टार्ट करके we have to go into this way. Cool, understood? Are you ready for the today's session? High level idea लग गया करने क्या वाले हैं आज? Yes, Cool. sir. Thank you. Thanks a Yes, lot. sir. Okay. Yes, yes. Now, before going into the cloud computing, okay, before discussing anything related to cloud computing, मैं आपको कुछ steps back लेके जा रहा हूँ. ये मैं आपसे कुछ questions पूछ रहा हूँ पहले. Okay. क्लाउड कंप्यूटिंग कंटेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होता क्या है भाई? पहले तो ये बताओ. जस्ट रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, क्योंकि अपन क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने आए, राइट? तो हमें पता तो होना चाहिए इसके अंदर होता क्या है. रेज योर हैंड. अभिषेक इज रेजिंग द हैंड. दीपक वर्मा इज रेजिंग हैंड. हाँ जी अभिषेक जी बोलिए, व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड कंप्यूटिंग कंटेंट्स? resource available on the cloud. थोड़ा और अच्छे से बोलिए. लेट अज्यूम यू आर सिटिंग इनटू द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है. ओके, सिर्फ इंटरव्यू को ऐसा नहीं बताना कि ये Earlier we were using on-premises environment to IT related work, but nowadays multiple cloud service providers provide the resource on the web, so we can purchase the resource as per the requirement and deploy our required application on the. ओके ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल. पर मैं अभी इसको वाव आंसर नहीं कहूंगा. ओके है ना? या दीपक गो अहेड, बोलिए. Sir, cloud computing is like नहीं सही से मेरा क्वेश्चन ये नहीं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चन नहीं है. आप क्वेश्चन को समझिए.
क्लाउड कंप्यूटिंग कंटेन्स, उसके अंदर होता क्या है? दिस सर इज माय उसमें क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक एंड है, लाइक स्टोरेज एज ए सर्विस। आप ये बोलना चाह रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्विस मॉडल्स होते हैं और यस, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, राइट? यस, सर्विस यस, मॉडल्स की बात कर रहे हो तो आईएएस, पीएस, एसएस, एफएस, सीएस ये होते हैं, ओके। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की अगर बात करोगे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, यस ये सर, बोलना चाह रहे हो? यस सर। भाई तो आपके माइंड में इतना क्लियर होना चाहिए, ओके। बट अभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन है। कंटेंट्स उसके अंदर मैं बता दूं, नाउ माइंड, ओके। इट कंटेन्स सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन विच वी कैन एक्सेस ओवर द Those इंटरनेट। who ये access सारी servers, चीजें, storage म्यूट संदीप databases भाई, and म्यूट म्यूट, संदीप भाई मैं बोल रहा हूँ तो म्यूट म्यूट गैस। आप लोग सर यू आर सर ऑन आप सर आप ये म्यूट मैं हो सर। सर म्यूट हो गया। you are in You mute. are not. आई एम टेलिंग, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक, जब भी आपको बात करना है, आप परमानेंट म्यूट करके मत रखो अपने आप को। स्पेस बार का एक बटन होता है, जस्ट प्रेस द स्पेस बार और उससे बात करिए, गॉट इट? चलेगा, है ना? प्लीज फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी ग्रेट फॉर अस, ओके। Now, what I'm trying to say, what exactly the cloud computing contains? Cloud computing contains server, storage, databases, and application. Okay. अब यहाँ पर, as you know, everyone knows Linux is the backbone. आपके जो भी servers, storage, database, everything is created. Everything, the backbone is Linux. Are you agree? Type you into the chat box. You into the chat box. Right? Now, I have a question which you have to write into the chat box. Okay. How many servers or how many percentage servers are Linux? कितने परसेंटेज सर्वर लाइनेक्स में बने? जस्ट राइट इनटू द चैट बॉक्स। 90% सर। 70%. 80 to 90%, guys, you are absolutely correct. More than 80% plus servers are available in Linux. तो सर लाइनेक्स तो बैकबोन हो गई, राइट? अब बिना लाइनेक्स के ना हम क्लाउड सीख सकते हैं, ना डेटा सेंटर सीख सकते हैं, ना स्टोरेज सीख सकते हैं। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? यस, नो? लाइनेक्स इज अ बैकबोन, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, लाइनेक्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइनेक्स, मेजरली यू हैव टू डिस्कस और यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कमांड्स। जस्ट टेल, लेट मी नो, कितने कमांड्स आपको आना चाहिए लाइनेक्स के? जस्ट थिंक इट, Yeah, हाउ मेनी कमांड्स यू हैव टू बी अवेयर? at least 10 समवन इज commands टेलिंग are the 50। frequently गाइस used. लिख दो ना, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, हम्बल रिक्वेस्ट, राइट इनटू द चैट बॉक्स, चैट में लिख दीजिए, है ना? प्लीज। Guys, so many people are telling 50, 60, 70, 100. Okay, चलो, I accepted your point. Okay, आपने बोला 100, हमने बोला yes, 100 plus command, yeah, around 200 commands you have to be aware of. ओके, गुड। अब यहाँ पे ये लाइनेक्स के विद दिस लाइनेक्स 100 कमांड और ये क्लाउड हम लोग मिलाकर हम लोग अपने गेट्स ओपन करेंगे फॉर द आईटी। आपको मेरा आइडिया समझ में आया? यू अंडरस्टूड माय अप्रोच? क्लाउड का नॉलेज और लाइनेक्स का नॉलेज करके हम अपना गेट ओपन कर रहे हैं फॉर द आईटी। कौन सा आईटी सर? जो आप, अगर आप नॉन टेक में हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि सर करना क्या है, कैसे स्टार्ट करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, वी आर ओपनिंग अवर गेट्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड और लाइनेक्स को मर्ज करके हम अपने आईटी के अच्छे पैकेज के गेट ओपन कर रहे हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सपोर्ट इंजीनियर, नॉन टेक पीपल, सेल्स प्रोफाइल, एनी प्रोफाइल, ओके, वॉट एवर यू आर, डजेंट मैटर, आपको ये दो चीज पता होना चाहिए। अंडरस्टूड मेरी बात? Why spend at 15 minutes? ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। Okay, cool. Thank you. Thanks a lot. Okay, yes, more than 50 commands. We have to be aware about it. Okay, Cloud plus Linux together opens a door for better career. Simple सी बात. Okay, and there are three varieties of major clouds are available. और क्लाउड के पार्ट्स होते हैं। हम लोग ऑन प्रेमाइसेस को भी अगर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अगर एक्सेस करते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो आप उसे भी क्लाउड कह सकते हो। क्लाउड ऑफ मेजरली टू टाइप्स, ओके, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। ओके, प्राइवेट क्लाउड जो आपका खुद का आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होगा। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, there is a isolated environment but multiple public resources can be available into that. Let's go more deeper into it, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, एंड नाउ guys, whoever is watching this on the YouTube, अगर कोई YouTube पर है, ओके, who is not a part of this WhatsApp group या Zoom link पर, okay, so you can scan this and come to the WhatsApp group so that what will happen, आपको हमारा Zoom का लिंक मिल जाएगा। ओके,
दैट्स इट। चलो लेट मी कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट। ओके, यहाँ पे 55 डेज लाइव सेशन हम लोग यही करने वाले हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय डे 2। व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, हम डाटा सेंटर के बारे में बात करते हैं, फिर डेटा सेंटर से हम क्लाउड के बारे में जाएंगे, क्लाउड से हम क्लाउड के मॉडल सर्विसेज पे पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उस मॉडल के ऊपर हमें आर्किटेक्चर्स बनाने हैं, लाइक मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज और सर्वरलेस। तब जाके हमारी ये जर्नी कंप्लीट होगी। अंडरस्टूड? 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 ये हमारा फ्लो है। ओके, नाउ before going anywhere, okay, let's understand what exactly the data center is. Okay, I will put one scenario before that. मैं आपके लिए एक सिनेरियो पुट कर रहा हूँ। okay, let us assume you have a one company, आपकी एक कंपनी है, okay, and you want to create a website for your company. आप अपनी कंपनी को assume करो, क्लाउड डेवऑप्स इज योर कंपनी, ओके, या कम्युनिटी है, यू हैव टू डेवलप द वेबसाइट फॉर दैट। वेबसाइट शुड बी लुक लाइक, इस टाइप की आपको वेबसाइट दिखना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, आप लोग मुझे बताओगे। ओके, क्या है, ओवर द आईपी सम नेम इज देयर, ओके, जिसका नाम है क्लाउड डेवऑप्स। जस्ट थिंक ऑल द कंपोनेंट, ओके, एक एक कंपोनेंट के बारे में सोचो। ओके, कि इफ आई हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट, what all components will be required, and I want you to raise a hand, unmute करके धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलते जाओ, so that I can mention it and we can discuss over the complete understanding. Okay, cool, go ahead। हाँ जी अभिनव, क्या क्या चाहिएगा if you have to create a one website? Uh, in data center, we required Okay, one I will server. allow you to unmute। Am I audible now? Yes, you are audible. I think Vikas disconnected. अभिनव, you are able to hear me? आपको मेरी बात आवाज आ रही है? सागर, सुमन, अभिनव अनम्यूट करिए ना। अभिनव, Sorry. अभिनव Yeah, अनम्यूट yeah. अनम्यूट Yeah, अनम्यूट। yeah. हाँ Yes, जी, now. यस अभी Okay. आ रही है सर। Yes. हाँ Okay, जी okay. बोलिए। सर So we सर्वर पर स्टोरेज चाहिए हमें। हाँ, डायरेक्ट वेबसाइट के लिए आपको स्टोरेज चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। CPU, memory, electricity, देखो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, आई basics. विल टेल यू। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको। सी, आप लोग स्टार्ट विद ए प्रॉपर वे। ओके, मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर इफ दिस इज द वेबसाइट, थिंक इट अबाउट द डीएनएस, ऑर्डर में चलने का कोशिश करिए। ओके, क्या होता है, वी आर डूइंग दिस मिस्टेक इन टू द इंटरव्यू। आप लोग ये मिस्टेक इंटरव्यू में भी करते हो, यस और नो? हैव यू फील लाइक दैट? इंटरव्यूअर यस। आपको कभी नहीं बताएगा, इंटरव्यू विल नेवर से कि भाई क्यों गलत हुआ, क्यों रिजेक्ट किया। ओके, और यू विल ब्लेम योरसेल्फ, और आप कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाओगे कि ही रिजेक्टेड मी, क्यों रिजेक्ट किया, आप कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लगाओगे। आई विल टेल भाई, स्टोरेज या सीपीयू से आगे स्टार्ट नहीं करोगे, थिंक इट इन ए ऑर्डर। किसको ऑर्डर में आंसर है, थोड़े थोड़े आंसर नहीं चाहिए। सुमन, इफ यू नो द आंसर प्रॉपरली इन द ऑर्डर पार्ट, देन ओनली स्पीक अप। बोलिए जी। सर मैं DNS, बोलूं? internet gateway सुमन बोलिए। services. We will need internet इंटरनेट gateway गेट, service. ठीक है, और We need a proper infrastructure like infra. We will need a space for the infrastructure. सुमन बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या? कुछ नहीं, इतना घबरा के आंसर दे रहे हो। IGV हो गया, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, पार्थ गो अहेड, बोलिए। सर एक आईपी चाहिए IP होगा। along with space to host the website. ओके, DNS is the आईपी, same thing. आईपी हमें चाहिए नहीं होगी। वी विल इफ वी क्रिएट ए वीएम, गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर में समझाऊंगा। इफ वी क्रिएट ए वीएम, अगर हम वीएम बनाएंगे, तो पब्लिक आईपी विल बी अलोकेटेड। ओके, विल बी अलोकेटेड, आपको वर्ड्स यूज करने होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे एक आईपी मिल जाए। ठीक है, चलो कूल, और बोलिए नितेश, गो अहेड बोलिए, या पार्थ गो अहेड, कंप्लीट करिए आपका वर्ड। So we Sir, need to configure subnet or firewalls. ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप इसको प्राइवेट करेंगे या वीपीसी बनाएंगे। ओके, पर मेरा क्वेश्चन अभी डेटा सेंटर में, तो वीपीसी बनेगा नहीं। ओके, नेटवर्किंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी, यस दैट्स ओके। यस अश्विन गो अहेड, नीरज गो अहेड। Sir, routers, switches. आप लोग चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, सच बता रहा Sir, हूँ, high आप लोग level. चीजों को बहुत सर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अच्छा High चलो मैं गाइस, level. बोलूं? आई विल सर मैं टेल, बोलूं? रेज योर हैंड डाउन, आप लोग अपने हाथ नीचे करो। ओके, रेज योर हैंड डाउन, सब लोग नीचे कर लो। जिसको सच में आंसर सच में पता है, हु कैन हेल्प अदर्स, आप प्रॉपर आंसर दे पा रहे हो, वो सर बंदा मैं सिर्फ बोलूं? हाथ ऊपर।
ओके, चलो निकेश भाई बोलिए। So first we need a domain name, and ठीक है। after once we will have a domain name, हम्म, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल, गो अहेड, कंटिन्यू। Okay, so first we need a domain name, and after that we need a hosting server. It could be anything ठीक based है। of requirement. We can get it from ओके, यहाँ AWS पे एक आप hosting. होस्टिंग सर्वर की जगह आप वीएम भी ले सकते हो, एक वर्चुअल मशीन भी ले सकते हो, ठीक है, या होस्टिंग सर्वर ले लिया, ठीक है। Yes, it could ओके, be from anywhere, from cloud or from like shared ठीक है, hosting ठीक है, providers. ठीक है, After ठीक है, that, we देन will देन have देन website files, ओके, whatever like. यस, ओके। आप यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क विल गेट स्टार्ट, और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क में HTML की कुछ फाइल्स होंगी, CSS की कुछ फाइल्स होंगी, राइट, कोड ऑफ द एप्लीकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद After that, we will require HTTPS like SSL certificate for securing our इफ यू वांट टू website. HTTP, अगर हमें उसे सिक्योर करना होगा, देन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, परफेक्ट। And देन after that, for like managing to our domain and all, we require DNS configuration, like DNS manager here. अब यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस मिलेगा होस्टिंग, या यहाँ पे हमें कोई आईपी एड्रेस मिलेगा, ओके, विद दिस आईपी वी हैव टू मैप विद डीएनएस। ओके, डीएनएस क्या होता है, ये जो नाम है इस नाम को डीएनएस कहते हैं। ओके, वी हैव टू डू द मैपिंग ऑफ द आईपी विद द डीएनएस, परफेक्ट। और बोलिए, आगे बोलिए। And once we will have the DNS management like C record, A record setup, then we अब require इसके अंदर database. डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, परफेक्ट, And like सुपर। database will be optional. If it is like data retention required, then database will be तो वो required. वेबसाइट के अकॉर्डिंगली अगर हमें स्टोरेज या डेटाबेस चाहिए होगा, तो वी विल कॉन्फ़िगर द डेटाबेसेस। And ओके, और apart from बोलिए। this, we will also require MS record required, like email setup is required. If it is required, नहीं नहीं, then वो we सब नहीं, वो require. सब हाँ, अगर अगर हमें फिर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओके, ईमेल व्हाट्सएप, अगर जो भी हमें इंटीग्रेशन करने होंगे वो हम एक्सटर्नल करेंगे। ओके So गाइस, this is the यू basic अंडरस्टूड। component which is required. ये बेसिक कंपोनेंट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी ऑफ द वेबसाइट। अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया? ठीक, आपको आंसर कैसा देना है, जैसा निकेश ने दिया। गॉट इट? मेरी बात समझ में आई, यस नो? तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द निकेश भाई, एग्जैक्ट Yeah. पॉइंट टू पॉइंट इनटू द ऑर्डर आपको बोलना होगा इंटरव्यू में। ओके, कूल, थैंक यू निकेश। ओके, एनीवन एल्स, अब आपके पास कोई और एग्जैक्ट कीवर्ड जो निकेश ने मिस किया, यू वांट टू स्पीक, देन लेट मी नो। एनीवन एल्स? सर इसमें पोर्ट या दीपक, होता गो है। अहेड। firewall नमन settings. नमन नमन नमन, विदाउट रेजिंग हैंड, विदाउट कमिंग ऑन कैमरा, प्लीज मत बोलिए। हाँ जी, दीपक वर्मा बोलिए। Sir, we required a DNS server and hosting server, भाई लिखा हुआ है, देखो development दीपक team. भाई, लिखा है डीएनएस होस्टिंग, हमने लिख दिया। माय क्वेश्चन इज, अगर आपको इसके अलावा कुछ और पता है तो बोलिए। नहीं? नहीं, no, sir, I नहीं, don't. कूल, थैंक यू, ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, कूल गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक पोर्ट नंबर पे हम इसे अलाउ करेंगे, द पोर्ट नंबर 80। ओके, पोर्ट नंबर 80 विल बी अलाउड। और अगर इफ इट्स ए वीएम, अगर इफ इट्स ए वीएम, ओके, इफ इट्स ए वीएम, वीएम विल बी अलाउड ऑन पोर्ट नंबर 22, right? If This if all setting, or this all settings, or this all configuration will be required if we want to create any of the minimal website required. Okay, good. अब यहाँ पे if I want to need all this component, अगर मुझे ये सारे components को create करना है, okay, then I need a multiple team. Okay, सबसे पहले setup करने के लिए system admin team, correct? I need a system admin team. I need a dev team. Okay, मुझे कुछ एक operation teams भी चाहिएगी, okay, right, to set up all these things. Are you agree? Yes or no? Now, up यहाँ पर see, he straightforward told कि take the hosting server ले लीजिए या VM ले लीजिए। ओके, इफ इट्स ए होस्टिंग सर्वर, मुझे अपना एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्लाउड, मैं अभी क्लाउड में जा ही नहीं रहा, मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा सेंटर। आई हैव टू थिंक अबाउट सम डेटा सेंटर, कोई प्लेस, या वहां से मुझे उनकी एक इंक्वायरी पुट करनी पड़ेगी। इंक्वायरी का 15 मिनट से 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, देन दे विल फुलफिल माई रिक्वायरमेंट। ऐसा ही होता है बिफोर क्लाउड। ओके, नाउ आई एम गोइंग मोर डीपर इनटू इट। आइदर otherwise I will think, yeah, no, I would like to create my own data center. So what I will do it, I will go for shopping, yeah, I will hire जिसने आंसर दिया था, okay, निकेश को, I will hire निकेश भाई, you have to go for the shopping, you have to purchase the right devices for my virtual machine or virtual environment creation, okay, और my data center create करने के लिए I need this all storage devices or something like that, right? So he will go for the shopping, he will upfront, he will ask some amount, कि sir upfront we have to pay something, and then only we will able to purchase this. Then again we have to configure it, and it will take 3 to 5 days of time to just host
to create this type of servers. Are you agree? Yes or no? मेरी बात समझ में आ रही है? Okay. Otherwise, एक और ऑप्शन होता है rent a hosting provider. Okay. Rent a hosting provider. Again, you have to raise a request. They will come up to your environment and they will put the environment, or you can say that okay, we will give my data to you. You can put it in your own environment. तो ये तीन तरीके पहले होते थे where these things are, but it will be very slow. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी? Okay, let assume you purchase the device. Okay, if any equipment failure, any communication failure, any power outage failure, any network failure, कोई सी भी प्रॉब्लम आई, what is the solution? You have to go to the data center. आपको जहां पे वो सर्वर लगाए हैं, आपको you have to go into that place, then understand the issue. आपको इशू को समझना है कि प्रॉब्लम क्या थी. करेक्ट? यस और नो? और फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फिक्स करना होगा कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फिक्स इट, एंड इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी. मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर में भी एडब्ल्यूएस क्लाउड की कोई बात नहीं कर रहा. ओके, एंड दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम कि कुछ भी प्रॉब्लम आई, ओनली द सॉल्यूशन इज यू हैव टू रन इनटू द डेटा सेंटर. ओके, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी? We are slow, we are very slow, our website is responding very slow, our downtime was very high. Let assume your data center is 10 kilometer away from where you are staying. सब कुछ चल रहा है, इट्स ओके. अदरवाइज यू हैव टू हायर अ 24/7 टीम जो आपका पे लेगी और वो हैंडल करेगी. ओके, अदरवाइज इफ इट्स अ 10 किलोमीटर डेटा सेंटर जस्ट नॉर्मल, ओके, in your office, so you have to go into that office and you have to fix it. So it will take a downtime of 5 to 10 hours कि अगर कुछ भी इशू हुआ तो 5 से 10 मिनट 10 आवर से पहले सॉल्व ही नहीं होगा. अंडरस्टूड? दिस वर द प्रॉब्लम्स. ओके, एक प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम. ओके, लेट अज्यूम यू क्रिएटेड योर डेटा सेंटर. ओके, आपने एक छोटा सा सर्वर रूम बना दिया एंड द सर्वर कैपेसिटी इज 4 GB. सिंपल, 4 GB इज द कैपेसिटी. आपके सर्वर की कैपेसिटी 4 GB है. ओके, नाउ you have to increase this 4 GB capacity to 16 GB. भाई क्या होगा? Again you have to go for the shopping, you have to purchase the thing and you have to do the things. Are you agree? Getting my point? मेरी बात से agree हो? Right? आपको पूरी या तो फिर से एक रिक्वेस्ट रेज करनी होगी प्रोवाइडर को 15 मिनट से 24 आवर्स में. दे विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू पे द बिलिंग अप्रूवल्स एंड देन इट विल गेट प्रोसेस और आपको वो 16 GB की रैम आपको लाके देगा एंड देन यू हैव टू फिट इट. भाई मिनिमम से मिनिमम 2 to 3 बिजनेस डेज लग जाते हैं सिर्फ रैम अपडेट करने. Okay, or now another, the best option come into the picture, that is cloud. What exactly happened? They say you have to stop the VM by own with the help of engineers or cloud engineer and restart it again by changing the configuration, and it took 2 to 5 seconds and your requirement has been fulfilled. यहाँ पे what is the biggest benefit came? Scaling is easy into the cloud. You are getting my point? मेरी बात समझ में आई? Yes, no? Right? Perfect. Okay, cool. Thank you. Okay, now in the traditional approach, आप use करो या ना, you have to pay the rent. Okay, if you are using or not using, okay, आपका यूजर्स कम है ज्यादा है, आपको पावर सप्लाई का पे करना है, कूलिंग का और मेंटेनेंस पे करना है, चाहे वो एक वेबसाइट हो या 100 वेबसाइट हो. करेक्ट? सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हु हैज ओनली वन वेबसाइट, टू वेबसाइट, उनके लिए मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. अंडरस्टूड? मेरी बात से एग्री हो? यस, नो? ओके, थर्ड पॉइंट, एडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ द हार्डवेयर. आपको कुछ नया हार्डवेयर को चेंज करना है, इट इज डिफिकल्ट. रिप्लेस करना है, दैट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग. स्केलिंग इज वेरी लिमिटेड. लेट अज्यूम आपके करंट सर्वर की कैपेसिटी है 1000 यूजर्स. ओके, सडनली 10,000 यूजर केम एक्स्ट्रा, तो देयर मे बी चांस योर सर्वर मे बी रिस्पॉन्डिंग स्लो और मे बी क्रैश्ड. यहाँ पे ऑटो स्केलिंग टाइप के फीचर नहीं होंगे कि एक वीएम चल रहा था ऑटोमेटिकली 1 से 2 हो जाएंगे या 2 से 3 हो जाएंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. स्केलिंग इज डिफिकल्ट और स्केलिंग इज लिमिटेड इनटू द डेटा सेट. अंडरस्टूड? मेरी बात से एग्री हो? टाइप इनटू द चैट बॉक्स. ओके, अनदर प्रॉब्लम, you have to hire a 24/7 team to 24/7 team to monitor the infra. ये जो infra है मॉनिटर करने के लिए आपको टीम्स हायर करनी पड़ेगी. सिस्टम एडमिन टीम, L1 टीम, 24/7 ऑन प्रीमाइस टीम, मल्टीपल टीम्स. यू हैव टू डू इट, हायर इट. ओके, अनदर प्रॉब्लम, एनी डिजास्टर हैपन, कुछ भी डिजास्टर है, चाहे वो अर्थक्वेक, पावर शटडाउन, फायर, XYZ, एनीथिंग, you and your team has to handle it and you have to fix it. कुछ भी प्रॉब्लम है, you have to fix it. These are the problem happen into the traditional data center approach. You are able to realize the problems. Guys, आपको प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है? यस, नो? आपको प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है?
राइट? अगर प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है, ओके, अगर प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है तो इनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस ऑल प्रॉब्लम द सॉल्यूशन केम एज ए क्लाउड, ओके. Now, I would like to listen a one line, very good definition with you guys. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में. What is cloud? एक बंदा raise your hand and give me the correct answer. हाँ जी, निकेश जी अगेन या वेट बोलिए. आ गया, Like श्रीनिवास ने एक आंसर दे दिया है. निकेश, जस्ट रीड it द आंसर फ्रॉम द श्रीनिवास. ओके, चैट में जो आंसर good दिया है. data center ओके, can access through हाँ जी जी, internet. बोलिए. We are just renting out some other system to use for our own. Correct. What exactly the cloud? Someone's else infra. Okay, someone's else infra. We are accessing with the help of internet. इंटरनेट के थ्रू अगर हम किसी के इंफ्रा को एक्सेस करते हैं, या कोई से भी ऑन प्रेमाइसेस को एक्सेस करते हैं, या किसी के भी डेटा सेंटर को एक्सेस करते हैं, दैट इज क्लाउड. अंडरस्टूड? बस इतनी सी बात है. दिस इज क्लाउड. ओके. और एक्चुअल में इन द रियल, ओके, इन द रियल, इनडायरेक्टली हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट देयर समवंस डेटा सेंटर. हम लोग किसी के डेटा सेंटर को बात कर रहे हैं, हम लोग किसी की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेटाबेस को रन कर रहे हैं वो सर्वर्स पे, और वी आर एक्सेसिंग समवंस एल्स मशीन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नोन एज क्लाउड. Simple language. Okay. There are multiple cloud providers are available into the market, जिनके सर्वर्स अवेलेबल हैं, डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं, वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, like Google Cloud, Amazon, Azure, Oracle, IBM, Salesforce, okay, Alibaba. So many cloud providers are available into the market, and we are using their service. हम किस सर्विसेज को यूज करते हैं, that is called cloud computing. Understood? मेरी बात समझ में आई? यस नो, यस नो. ओके. देर आर मल्टीपल प्रोवाइडर्स इनटू द मार्केट, वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज, उनकी सर्विस को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड. दैट्स इट. ओके, कूल. एंड इन द क्लाउड देर आर थ्री मेजर, आई कैन से फोर मेजर वेराइटीज ऑफ cloud types of clouds are available. Four major types of cloud. First is public cloud. Okay. Third provider over the internet in a cost effective way, sharing basis we can able to use this, that is called public cloud. थोड़ा सा शेयरिंग बेसिस आप यूज कर सकते हो. ओके. प्राइवेट, योर ओन आइसोलेटेड, ये मेरा है, my own resources, my own security, my own rules and regulation will be used, that is called private. Your own closed resources available only for you, okay, highly secure, you can create your own security rules. Let's take an example. पीजी, ओके, आप लोग पीजी में बहुत से रेस्टोरेंट्स रहे होंगे. ओके, देयर इज ए पब्लिक पीजी, मतलब एक बड़ा सा हॉल टाइप का जहाँ पे टेंट शेयरिंग टाइप से होता है, करेक्ट. ओके. एक प्राइवेट जिसके अंदर यू आर द ओनली वन, सिर्फ आप रहते हो, करेक्ट, यू आर द ओनली वन, प्राइवेट प्राइवेट रूम, ओके, इनटू द पीजी. डॉर्मेंट्री, हाँ जी, आनंद भाई ने बोला डॉर्मेंट्री, यस वही बोला. ओके. अब यहाँ पे हाइब्रिड, सी आप यू कैन चूज कि सर मैं भी रह सकता हूँ, तू भी रह सकता है, चार लोग वैरायटी, एक जैसे लोग हाइब्रिड वैरायटी में ले सकते हो कि यार थोड़ा सा पब्लिक भी हो गया, थोड़ा सा प्राइवेट भी हो गया, दैट इज द थिंग. ओके, जिसके अंदर शेयर पब्लिक और प्राइवेट भी. एक और होता है कम्युनिटी. ओके, सेम इंटेंशन, जैसे लेट अज्यूम आप लोग बिहार के होते हो, कई बार सम स्टूडेंट बिहार बिहार तो बिहारी ही सब अपना एक रूम ले लेते हैं, करेक्ट, यस और नो, होता है. नॉर्थ साइड के तो नॉर्थ साउथ वाले अपना एक रूम ले लेते हैं, तो दैट इज कम्युनिटी क्लाउड. इस टाइप की चीजें होती है. ओके. हाइब्रिड के अंदर either public either private, that is also acceptable. Okay. Hybrid के अंदर one resource from somewhere, okay, one resource from one provider, another resource from another provider, that also can be acceptable into the hybrid. मेरी बात समझ में आ रही है? Varieties of clouds are available into the market. Yes, यही हमें कॉन्फ़िगर करना है, यही हमें समझना है. Okay. Now, ये सब मैंने इनकी डेफिनेशंस दी है गाइस. इफ व्हेनेवर आई विल गिव दिस पीपीटी, आप थोड़ी सी डेफिनेशंस को रीड भी कर सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल. ओके. सर क्या बेनिफिट है क्लाउड का? ओके. कॉस्ट सेविंग, यू डोंट हैव टू क्रिएट द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको कोई अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. इट विल बी प्योर कॉस्ट सेविंग, आपकी कॉस्ट सेव होगी यहाँ पर. ओके. बेटर क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे यू डोंट हैव टू परचेस ईच एंड एवरीथिंग, quality will be better, collaboration will be better. Okay. If you need anything, something, you as per your requirement, you can request it, it will be provided to you. Okay. You can able to see the insights, what exactly happening into the environment, how much monitoring is set up, what exactly the setup, how much costs are going, this all insights will be available.
बेटर सिक्योरिटी, अगर आप अपना खुद का बनाते हो क्लाउड और अपना खुद का डेटा सेंटर बनाते हो, इट विल बी लिटिल बिट लेस सिक्योर बिकॉज दे आर एक्सपर्ट एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सिक्योरिटी एज वेल। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने का, स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल, मोबिलिटी आज चाहिए कल नहीं चाहिए, अगेन यू नीड इन डिफरेंट लोकेशन, दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अंडरस्टूड? आप लोग को बहुत बेसिक लग रहा होगा, यू मे फील लाइक दैट। ओके, फील लाइक बेसिक, बट आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? आर यू लर्निंग न्यू? कितने लोग यहाँ पे न्यू सीख रहे हैं? जस्ट टाइप न्यू इनटू द चैट बॉक्स। न्यू न्यू न्यू। दीपक भाई न्यू सीख रहे हैं, पूजा, सुमन, राकेश, संदीप, अबर। ओके, कितने लोगों के लिए ओल्ड है कि सब पता है? ओल्ड लिख दीजिए, जस्ट टाइप ओ इनटू द चैट बॉक्स। ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड है, करेक्ट, परफेक्ट। ओके, पता भी होना चाहिए। ओके, ओल्ड न्यूज वट एवर इट इज, यस, पता होना चाहिए। सर ये पता तो है, बट एग्जैक्टली कीवर्ड्स क्या होने चाहिए इंटरव्यू में यूज करने के लिए, वो इट्स अ मैटर। करेक्ट। ओके, देखो अभी अपन डेफिनेशन पूछे व्हाट इज क्लाउड तो भी गलत आती है, करेक्ट? राइट, cool, तो थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लगेगा, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, cool, guys, there are some benefits: faster reliability and scalability. Okay, हम cloud is little bit faster ऐसा कहते हैं। okay, this is obviously faster as compared to data center because हम लोग यहाँ पे latencies checks कर सकते हैं। okay, latencies check कर सकते हैं। okay, enhance business value, आपकी जब सिस्टम अगर पूरा कम क्लाउड पे होता है, ओके, तो इस बिजनेस बिजनेस वैल्यूज इंक्रीज होती है। लेट अज्यूम आई हैव अ बिजनेस इन इंडिया, अगर मेरा बिजनेस यूके में जाता है, so I don't have to create an underlying infrastructure into the UK. I can directly enable the resources into the UK and it will work. Okay. Reduce cost. Upfront कोई costing नहीं है. Zero costing. Improve business interaction and collaboration. वही चीज. If your business has been increased into different place, it will be better. Okay. Easy backups and restore. Cloud के अंदर बहुत easily we can take the backup. In fact, everything is one click. आपके हर चीज one click पे होगी. Okay. Complete age sustainability, मतलब let age sustainability means there are multiple age locations are available. Let assume, let's take an about AWS. Okay, AWS has a one service जिसका नाम है CloudFront. Okay, CloudFront मतलब इसको cache servers will be available and it will be available in more than 100 plus location. आप अगर एक सर्विस यूज करते हो, you are using one service, your website will be hosted in the 100 different location is also possible. इस टाइप की चीजें, इस टाइप की सर्विसेज, इनको इनडायरेक्टली अनदर लैंग्वेज सीडीएन भी कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल इनटू द क्लाउड, यही हमें समझना है। ओके, फ्लेक्सिबल, यस, स्टोरेज कैपेसिटी इज virtually unlimited. Okay, virtually unlimited capacity is also available. Okay, we can move from one place to another, we can work remotely अगर क्लाउड का सर्वर है। लेट अज्यूम योर डेटा सेंटर्स आर इन मुंबई, एडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ओके, एडब्ल्यूएस योर डेटा सेंटर इज मुंबई, यू डोंट हैव टू गो टू मुंबई, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर वेयर द इंटरनेट इज अवेलेबल। ओके, so this type of mobility is available with the help of cloud. ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो पेपर यूज मॉडल है। हाँ जी, आपको जो यूज करोगे उसी का पे करना है, यू डोंट हैव टू पे एवरीथिंग, लाइक दैट थिंग्स आर अवेलेबल। नाउ लेट्स सी द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड इन टू पार्ट्स। ओके, वन पार्ट, मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, वन पार्ट टू, ओके, और पार्ट वन, फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड में आपके पास एक यूआई होता है, दैट यूआई कैन बी एक्सेसिबल, उसको हम लोग कंसोल कहते हैं। right, console can be accessible from your mobile phone, laptop, okay, any other devices you can access. So एक simple language में I am going to AWS account, मैं अपने AWS account पे गया। okay, and यहाँ पे इसका URL है aws.amazon.com/console. I am talking about this console, this is the front end, ये आपका front end हो गया। okay, this you can access from your mobile phone, laptops and so many different places. आप इसको अलग अलग जगह से यूज कर सकते हो। as soon as with the help of internet you will be signing into the environment, you will be signing into the environment, इस environment के अंदर जाने के बाद there are services, ये रही वो services, these are the services available। okay, ये सारी services available हैं। okay, means these are the backbone virtually available services like virtual machine, okay, databases, servers, security system, and around 200 plus services are available. ये रही वो सारी सर्विसेज विच वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो क्लाउड का आर्किटेक्चर कितना सिंपल हो गया, फ्रंट एंड, बैक एंड और बीच में इंटरनेट। अंडरस्टूड? टाइप यू इनटू द चैट बॉक्स। okay, अब यहाँ पर, यहाँ हियर मल्टीपल वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक
they provided UI, they provided console, they provide CLI, command line interface, okay, they provide SDK, right? They provide multiple varieties of options to you, okay, to access the backend. Can you write into the chat box? To access the backend from the cloud, how many varieties of things they have provided? UI, console, CLI, SDK, और हमें ये चीजें एक्सप्लोर करनी है. Just write into the chat box. लिखिए क्या क्या है. अच्छे से नहीं दिख रहा, but think it and write it. UI, console, CLI, SDK. Correct. Okay. With the help of these things, we will able to access the our cloud. SDK, one student is asking what is SDK. SDK is a software development kit. If you want to develop any of the software or application over the cloud, there are some utilities or SDKs are available. With the help of that, we can develop the things over the cloud as well. भाई समझ में आ रहा है? Type you into the chat box. नीलेश थोड़ी सी देर है ना? Understood? Perfect. Thank you. Okay, cool. Just see this, guys. In the cloud computing, two things are there majorly: cloud models, okay, or service models. Okay, cloud model, we are talking about the cloud. Service models, we are talking which type of services they are providing us. Got it? हाँ जी नीलेश बोलिए क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मैंने कोई वर्चुअल मशीन या कोई स्पेस ली है क्लाउड से and it नहीं around आ रही नीलेश भाई, your voice is not coming very clear. हेलो हेलो इज एम Nilesh, you can ऑडिबल write the question. अपन लिख देना, आप लिख देना है ना, we will take it. Cool. Cool. Now, उसके बाद guys, as you understood how the cloud works. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर क्लाउड वर्क कैसे करता है? ओके, क्लाउड वर्क्स बिकॉज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन. अब यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली द वर्चुअलाइजेशन इज? ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन करके मतलब हम लोग यहाँ पे इनेबल करते हैं अपने इन्वायरमेंट में. Because of that, it will be accessible over the internet. Means accessing someone's hardware virtually, that is known as virtualization. किसी भी सर्विस को वर्चुअली एक्सेस करने के लिए हमें उसका वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना पड़ता है. और उस टर्म को ही, और उस अगर वर्चुअलाइजेशन, इफ द वर्चुअलाइजेशन हैज बीन इनेबल, देन उस मशीन को हम लोग कहते हैं वीएम. ओके, इफ एनी मशीन वर्चुअलाइजेशन हैज बीन इनेबल, then we can call this machine as a virtual machine. Indirectly, someone else machine accessing with the help of internet, accessing with the help of virtualization technology is known as virtual machine. Indirectly, someone else computer accessing over the internet. Got it? समझ में आ रहा है? Yes, no, yes, no. Okay. Someone is telling the answer hypervisor. Obviously, इस इन दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजी और टूल यूज होगा उसका नाम है हाइपरवाइजर. अभी आएगा पिक्चर में. ओके, perfect. Creating a virtual machine in Citrix, creating a virtual machine into any of the cloud provider. That is the one. Yes. Okay. Okay. Now, okay. Guys, करें क्या एक सिनेरियो की तरह चल के देखें? Are you ready? Are you ready? Okay. Today आपको नहीं करना है, अभी नहीं करना है. Just see it. Okay. क्योंकि आपको अगर समझ में आ गया, you understood the thing, तो आप लोग अगले सारे प्रैक्टिकल्स मेरे साथ कर दोगे. Got it? अभी यहाँ पर ओके, लेट अज्यूम अभी हमने जो बात करी थी, वी हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट. आपको एक वेबसाइट बना. ओके, यू हैव टू क्रिएट वन वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एंड डेवऑप्स टेक्नोलॉजी. ओके, क्लाउड मतलब क्लाउड प्रोवाइडर होगा, डेवऑप्स मतलब कुछ ओपन सोर्स टूल्स होंगे. गॉट इट? यस नो? यस नो, यस नो, यस नो. ओके, कूल. और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड वी विल क्रिएट एवरीथिंग. हम लोग सारी चीज बना देंगे. ओके, कूल. अब यहाँ पे गाइस, फर्स्ट स्टेप मैं बोल रहा हूँ, just read the lines. First step, go to any cloud provider. किसी भी cloud provider में जाओ, GCP, AWS, Azure, किसी भी cloud provider में जाओ, go into any of the cloud provider. वहां पे एक VM बनाओ. ओके, क्रिएट ए VM. उस VM के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसका नाम है डॉकर. और डॉकर के साथ या तो आप कोई वेबसाइट ले लो या कोई कंटेनर. ओके, वेबसाइट डाउनलोड, वेबसाइट में क्या होगा? कोड होगा. ओके, इट विल बी कोड. तो मैं कोड की जगह बोलूंगा आप एक कंटेनर ले लो. इट कैन बी एनी कंटेनर. ओके, जिसके अंदर कोड ऑलरेडी इनसाइड होगा. ओके, और उस कंटेनर को रन कर दो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या डायरेक्ट कंटेनर को रन कर दो और गो टू द आईपी एड्रेस एंड चेक द एप्लीकेशन. आपको ये स्टेप समझ में आई? यस नो? मेरी स्टेप समझ में आई है एवरीवन?
Neeraj, Pradeep, everyone. Okay, I'm repeating again. Okay, see, जो अभी हमने सिनेरियो लिया था, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द सिनेरियो. हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखें. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द स्टेप वन, गो टू एनी क्लाउड प्रोवाइडर, कोई से भी क्लाउड प्रोवाइडर में चले जाओ, बिकॉज वी नीड ए वी. ओके, इन द जीसीपी, व्हाट इज द वीएम नेम, वीएम का नाम क्या होता है, व्हाट इज द वीएम नेम इन जीसीपी, व्हाट इज द वीएम नेम इन एडब्ल्यूएस, व्हाट इज द वीएम नेम इन अज्योर. प्लीज मेरी हेल्प करिए. Virtual machine, यहाँ पे उसे हम लोग इन GCP द virtual गूगल machine. क्लाउड हम लोग कहते हैं, इन द गूगल क्लाउड वी आर कॉलिंग एज ए कंप्यूट इंजन, कंप्यूट CPU. ओके, इन द AWS वी आर कॉल्ड एज ए EC2. 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 ओके, right. और Azure में क्या कहते हैं, VM. VM VM. वर्चुअल मशीन. ओके, VM वर्चुअल मशीन कहते हैं. ओके, अब यहाँ पे EC2 सबसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EC2, EC2 का फुल फॉर्म क्या है, Elastic इलास्टिक compute. क्लाउड. Elastic computing. इलास्टिक कंप्यूटिंग. इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. ओके, इलास्टिक मीन्स EC, Flexible. elastic Expandable. compute. Flexible. That is Flexible, Stretchable. flexible, इंक्रीज और डिक्रीज, flexible, स्ट्रेचेबल. flexible, scalable. गाइस, आप लोग अपने आप को म्यूट पर रख कर भी बोल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको अनम्यूट करने की, म्यूट पर रख के भी बात कर सकते हो. ठीक है, म्यूट पर रख के भी बात कर सकते हो. ओके, गुड. इलास्टिसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, कंप्यूट, कंप्यूट मींस होता है सीपीयू एंड मेमोरी. ओके, मतलब द प्रोसेसिंग पावर ऑफ आवर मशीन इज नोन एज कंप्यूट. अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आ रही है, टाइप यू इनटू द चैट बॉक्स. ओके, ऑन द क्लाउड. Okay, so what do you mean by EC2? Elasticity, increase or decrease, compute, CPU memory, power, and on the cloud. That it is EC2. VM, virtual machine accessing over the internet is known as virtual machine. Okay, good. Now, CE का full form एक बचा, compute engine. CE का full form होता है compute engine. मतलब compute मतलब CPU memory का एक ready-made engine. That is CE. Okay, good. We will create a virtual machine. Now I am helping you out to create a virtual machine. यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक never क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ये देखा भी नहीं है, नेवर सीन या नेवर क्रिएट, जस्ट राइट इनटू द चैट बॉक्स. नेवर क्रिएट, नेवर सीन, कितने लोग हैं, नेवर वाले बहुत लोग हैं. ओके, गाइस, अब यहाँ पर हमारी एक डिपेंडेंसी होगी, वी नीड ए क्लाउड अकाउंट, हम लोग बनाएंगे. आई विल टीच इट. ओके, वी विल स्टार्ट विद द गूगल क्लाउड. हम लोग इस गूगल क्लाउड से, इस कोर्स के अंदर, इस जर्नी के अंदर सबसे पहले गूगल क्लाउड से स्टार्ट करेंगे. ओके, फ्राइडे, ओके, फ्राइडे को हम लोग गूगल क्लाउड का अकाउंट, आई विल हेल्प यू कैसे बनाओ. ओके, फिर नेक्स्ट फ्राइडे एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाएंगे. ओके, और नेक्स्ट मंथ अज्योर का अकाउंट बनाएंगे. अंडरस्टूड, वन बाय वन, एक साथ सब नहीं बनाना है. अंडरस्टूड है ना. तो डोंट फील कि सर मेरे पास अकाउंट नहीं है, आज आपके पास अकाउंट नहीं है, मुझे पता है, आई नो यू डोंट हैव द अकाउंट. ओके, आज आप देख रहे हो, आज देखोगे तभी तो कल बना पाओगे. इज दैट ओके, है ना. दैट्स इट. तो टुडे आई एम गोइंग इनटू द गूगल क्लाउड. ओके, मैं गूगल क्लाउड में जा रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट गोइंग. एनीवन नोज द यूआरएल ऑफ द गूगल क्लाउड, कि यूआरएल क्या होता है सर गूगल क्लाउड का, कोई बता पाएगा, मेरी हेल्प कर पाएगा. console.google.com. बोलिए बोलिए, console.cloud.google. Cloud.google. Yes. Okay, I'm just coming here. ये मैं ब्राउजर खुलना. I'm coming to the browser, okay, and I'm going into this link, console.cloud.google. Sir, it hasn't asked any username password. हाँ जी, ये username password बिल्कुल नहीं मांगता. Okay, क्यों? Because we have logged in direct with the Google Cloud, Google account, Gmail login होता है, तो it will be direct landed into that place. But you have to create account create होने के बाद ही चलो. Okay, this very first thing, as soon as we will create a Google Cloud account, you will get a project. Okay, as a scratch, everything start with a project. आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा. Okay, you have to click, here is the name, ये जो नाम है प्रोजेक्ट का नाम है March 2022 paid. Okay, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, you have to click on the name, यहाँ पे आपको नाम पे क्लिक करना है. Okay, you have to click on the name, here is the option coming, new project. Okay, you will click on the new project. Okay, as soon as you will click on the new project, यहाँ पे एक नाम बनाने का ऑप्शन आ रहा है, give the name, anyone type your name, कोई भी अपना नाम बोलो. Nilesh. Anyone?
Sameer. Okay, guys, I'm creating a project with the name Sameer, Sameer, Sameer. Okay, Sameer 123. Okay, I'm repeating again, guys. I'm repeating again. Okay, I'm going into the console.cloud.google.com. Okay, उसके बाद there is a top here. यहाँ पे project का नाम आ रहा है. I click on the project name. As soon as I click, here is the option new project. Okay, as soon as I will click on the new project, यहाँ पे नाम आएगा. We have a option. We can create a new project. Sameer 1 2 3 4. मैंने यहाँ पे नाम दिया. Okay, in your company there will be some organizations that is called landing zones. ओके, जो हम लोग आगे जाके बात करेंगे, अभी नहीं. ओके, आई क्लिक ऑन क्रिएट. मैंने जैसे ही क्रिएट करा, माय प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड. यहाँ पे समीर 1 2 3 नाम का प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट क्रिएट. अंडरस्टूड? इज दिस टफ? ये बहुत टफ था क्या? आनंद पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम शुड बी यूनिक. नहीं, कोई यूनिक लेने की जरूरत नहीं, आप अपने अकाउंट में ले सकते हो. ओके, मल्टीपल या आपके अकाउंट में शुड बी यूनिक. इन द वर्ल्ड वाइड इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी सिमिलर ऑल्सो, चले. ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे ही हम आया, गाइस आई केम हियर, द प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड. ओके, अब here this is the name of the project, here's the project number. This will be always unique whenever we want to raise any request to the cloud team, Google Cloud. This project number will be always unique. You will give this project number and they can able to check your account. Understood? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, no? Okay, and Yes. here यहाँ पे आपको एक API वाला टैब दिख रहा है. Okay, this API tab, if any services are getting used or getting consumed. Okay, हाँ, मेरे को वार्निंग आ रही है, ये अलग है, ये मेरी प्रोजेक्ट वार्निंग है. ओके, आपको उसकी टेंशन नहीं, ये प्रोजेक्ट वार्निंग है. ओके, ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वार्निंग नहीं है, ये मेरे अकाउंट में, बिकॉज वी आर कीपिंग द रिसोर्सेज एक्टिव ऑलवेज, तो उसकी वजह से एक वार्निंग आ गई है. ओके, कूल. यहाँ पर हियर इज एपीआई. What exactly this API? As soon as I will come into the environment, I'm hitting the URLs. I will hit the services of GCP, right? So the API will be enable, और ये request मतलब ये बता रहा है कि yes, connections are established और कुछ कुछ आप कर रहे हो. Okay, if I will create a VM की एक API enable हो जाएगी. If I create a database API will be enabled. If the data are getting transferred, it will say that you are connected, or requests are going and requests are coming. This is called API, means any application is getting integrated, connected. This will be visible into this place. और ये यहाँ पे मेरा billing. Understood? Yes, no? Understood. Now I'm coming into this service here. यहाँ पे here is a name, compute engine. I can click on this, or I can click on this. मैं यहाँ पे सर्च बार पे आ रहा हूँ और I'm typing compute, 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 ENGINE, compute engine, and one service is coming. जिसके अंदर products के अंदर है, products के अंदर VMs, GPUs and TPUs and disk. In the compute engine, as I told, compute मतलब CPU memory resources. CPU memory resources are getting used in virtual machine, GPUs and TPUs and disks. Okay, so I click here. As soon as I click here, I will be landed into the home page of virtual machine. Virtual machine के home page पे मैं आ गया. Okay, guys, how many virtual machines are available here? कितनी virtual machines हैं अभी यहाँ पर? Zero. एक भी नहीं है. Okay, एक भी नहीं है. Okay, now I click on create instance. मैंने यहाँ पे create instance पे click करा. Okay, here it is asking me the name. कोई एक बंदा नाम बताएगा? Tell me any of your name. आपका नाम बोलिए. जिसने आज तक नहीं बनी, never, जिसने आज तक नहीं बनी, सतीश, ऋषभ. अरे ठीक है, ऋषभ भाई बोल रहे हैं, उन्होंने आज तक नहीं बनी. RISHAB, ऋषभ, RISHA. ऋषभ भाई, आज के बाद ये कोई नहीं बोलेगा कि नहीं बनी है, नहीं देखते हुए, नहीं बनते हुए नहीं देखी. ओके, तो आई क्लिक ऑन, आई जस्ट गिवन अ नेम ऋषभ. This will be available into this location. I'm not talking more about it. Okay, I'm not talking about more about it. But yes, the machine will be available into this location. Guys, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ रहा है, generate machine with the Gemini. मतलब we can give a prompt. कि I need a low cost machine, I need a low volume machine, I need a AI/ML interface machine, and the prompt will help us to create a machine. मेरी बात समझ में? जब भी मैं 4 तरीके बता रहा था, 4 के को 5वां भी एक और आ गया है, AI. Getting my point? Yes or no? Right? So AI can also help us to create a VM. हम लोग देखेंगे in the upcoming. Okay. Now I'm not choosing anything. I'm just taking 2 CPU, 1 core and 4 GB memory. That is the name as E2 medium. ये नाम आ रहा है. I'm okay, fine. Okay. Operating system. I'm coming to the second tab. Operating system tab. Yes, which is the most popular operating system available into the market. Ubuntu. Windows, Linux. Ubuntu. Ubuntu. Windows जिसने भी बोला था, absolutely wrong answer हो गया है. ठीक है, इंटरव्यू में मत बोलना. Okay, I click on change.
I just change the operating system to Ubuntu, Ubuntu. Okay, and I click on Ubuntu. Yes. अब यहाँ पे Ubuntu का which version I have to take it, guys? In your company, in your environment, which Ubuntu operating system version you are using it? Just write into the chat box. Full name चाहिए मुझे, full name चाहिए. कानू शर्मा is giving the answer, guys. कानू शर्मा ने आंसर दिया 24.4 LTS was. ओके, अब यहाँ पे दो चीज आएंगी, दो नहीं, मल्टीपल थिंग्स विल कम. वन इज एलटीएस मिनिमल. मिनिमल मीन्स मिनिमल रिसोर्सेस विल बी देयर, एटलीस्ट लाइट वेट. ओके, नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई केम लिटिल बिट डाउन. ओके, हियर 24.4 एलटीएस और उसी के अंदर 24.4 एलटीएस के अंदर दो आ रहे हैं. व्हाट इज द 64 डिफरेंस? समझ में आया क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? second one is 64 64 bit and it और ये वाला भी तो 64 ही है. processor is Processor different. Processor is different. first One The one is is CPU 32 architecture is different. 64. first Yeah, one is ARM architecture processor. wise, CPU guys, architecture is different. architecture wise is different. One is Intel processor, एक Intel processor और एक ARM processor है. Okay, whatever we want we can take it. Okay, at this point I am taking 64-bit Intel processor वाला 24.4 LTS. Now the question will come in your mind is, sir, why you choose this one? I choose this one LTS because it's a long term support. Long term की तरह ये मेरे साथ available रहेगा next 1 or 2 year. I don't have to update this into the environment. Agree? Yes, no? Make sense? Okay, so whenever anyone asked, okay, which operating system you are using in your company, you can say Ubuntu, and that is 24.4 LTS version we are using at this point. Okay, size can be anything. Okay, what is the size in your environment? Size of the VM. मैं size डिस्क की बात कर रहा हूँ. Hemant is telling for learning purpose we can take 30. हाँ जी, learning purpose we can take 30. Not too big, not too small. Okay, in your company the size can be 512 MB, 512 GB, 512 GB का आप लेते हो. Understood? Okay, cool. Now I'm coming down. Okay, networking, I allow the traffic. Okay, so that what will happen, यहाँ पर कुछ network के tags enable होंगे. Okay, just understand at this point some network tags will be enabled. Firewall में ये firewall से integrate हो गए. यू कांट बिलीव, आपको बिलीव नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इसको क्लिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ये नेटवर्क के टैग्स, जस्ट सी इट ऑन ए हाई लेवल. अभी हमें कुछ नहीं करना है. ओके, आई एम जस्ट ओपनिंग वन मोर टैब, एक और टैब ओपन कर रहा हूँ. ओके, जीसीपी का. हाँ जी, रिलेटेड टू सिक्योरिटी. ओके, हियर आई एम गोइंग फायरवॉल. Now, very basic question, guys. Very basic question. Okay, this is a firewall rule. है. There is a firewall rule. ये HTTPS. Okay, HTTPS और HTTP को मुझे अलाउ करना है. Okay, ये दो firewall rule मुझे इंटीग्रेट करने मेरी VM के अंदर. Okay, my requirement is I want to integrate this firewall rule on this VM. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इन दो को सिलेक्ट करूंगा. ओके, as soon as I will select HTTP सर्वर, HTTP सर्वर, यहाँ पे देखोगे HTTP सर्वर, HTTP सर्वर दोनों अलाउड हो जाएंगे. ये रहे, इनके नाम यहाँ पे लिखे होंगे, ये देखो HTTP सर्वर, HTTP सर्वर S, राइट दिख रहा है? यस नो? ये दोनों इसके अंदर अटैच हो गए. नेटवर्क रूल हैज बीन अटैच्ड. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहाँ पर मैंने जो रूल में बोला कि अलाउ कर देना, तो इट विल अलाउड. अगर मैंने यहाँ पे बोला ब्लॉक कर देना, तो इट विल गेट ब्लॉक ऑटोमेटिकली फ्रॉम हियर. अंडरस्टूड? समझ में आया? थोड़ा हाई लेवल समझ में आ रहा है? बिकॉज वी हैव टू लर्न ऑल दिस. हमें यही सीखना है सारी इंटायर जर्नी में. हाउ यू विल बिकम अ क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर कैसे बनाओगे, ये इतने से जस्ट 2 क्लिक्स. यहाँ पे आपने सिलेक्ट करा, यहाँ पे ये लिखे हुए रूल्स और ये इंटीग्रेट हुए. दैट्स इट. ओके, उसके बाद गाइस आई वाज टेलिंग अबाउट द मल्टीपल वेज. ओके, मैं आपको मल्टीपल तरीके बता रहा था. ओके, वन इज आई क्लिक ऑन क्रिएट, माय मशीन विल बी रेडी. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड यूआई अप्रोच. यस नो? यस नो? ओके, अब मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, इक्विवेलेंट कोड. देयर इज वन मोर ऑप्शन हियर, इक्विवेलेंट कोड. आई क्लिक ऑन इक्विवेलेंट कोड. जैसे ही मैंने क्लिक करा, यस, मैंने आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस बताए थे. एक बताया था कंसोल, और बोलिए क्या थे? CLI CLI, हाँ जी, SDK, और DK, DK, हाँ जी, SDK, और IAS, UI, AI, IAC, ओके, IAC, ओके, और
यूआई, हाँ जी यूआई कंसोल, वो यूआई हो जाता है, कंसोल इक्वल टू यूआई हो जाता है। ओके, और AI, एआई, ठीक है, और एक और है। ओके, एक और है, ओके, जिसका नाम है रेस्ट REST एपीआई। API। गुड। ओके गाइस, यू आर थिंकिंग हम लोग कितना वाइडर सोच रहे हैं, देयर आर मल्टीपल वेज। भाई इन सबको करने के लिए अप्रोच, इफ यू विल कम हियर कमांड लाइन, हियर आर कमांड लाइन, हियर इज अ कमांड लाइन अप्रोच, हियर आर कमांड आपके लिए रेडीमेड कमांड। यू विल थिंक फ्रॉम हाउ वेयर द कमांड्स आर कमिंग। ओके, कुछ नहीं करना, आप इसको बंद कर दो। इफ यू विल क्लिक अगेन, अगेन द कमांड विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, कमांड जनरेट हो गया है आपके लिए। ओके, यू कैन कॉपी द कमांड, एंड अगर आपको CLI चाहिए, यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड, आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करोगे कंसोल के अंदर, एंड योर VM विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ CLI अप्रोच। ओके, अब यहाँ पे व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट इज द डिफरेंस। ओके भाई देखो, अब मैं अगर सिंपल बोलूँ, कंसोल और यूआई से एक जूनियर इंजीनियर बनाएगा, जिसका पैकेज बनेगा 5 LPA तक। ओके, मैक्स 5 7 10 LPA तक पहुंचेगा। इफ यू आर स्टार्टिंग यूजिंग द CLI, यू कैन एबल टू रीच टू 10 LPA। मेरी बात समझ में आई? अगर SD के अप्रोच में चले गए, तो थोड़ा सा 15 LPA पे जाने लोगोगे। ओके, ISC में चले गए मतलब टेराफॉर्म के अंदर आ गए। ओके, मतलब 20+ या 25+ LPA भी जा सकती हो, और उसके अंदर AI भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ठीक है, 5 लाख और मिल गए, 30 LPA तक पहुंच सकती हो। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? भाई बनानी VM है, सब VM बनाएंगे। ओके, बनाना VM ही, क्लाउड के अंदर VM ही बनता है, बट आप योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन विद हेल्प, आप सीधे बोलो आपकी कंपनी में आप ये तरीके भी यूज करते हो, देन यू आर प्रूविंग योर सेल्फ कि भाई आप 30 लाख के लायक हो या 30 LPA के लिए एलिजिबल। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यस नो? राइट, तो स्लोली हमें अपना लेवल इंक्रीज करना है, स्टार्ट यहीं से होगा, बट स्लोली इन द माइंड कि सर आने वाले 10 दिन तक यहाँ पे पहुंचना है, आने वाले 2 महीने में हमें यहाँ पे पहुंचना है, आने वाले 3 महीने में हमें यहाँ पहुंचना है। अंडरस्टूड? ओके, गुड, थैंक यू। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस कमांड, मैंने कमांड लिया CLI का। ओके, कुछ एक स्टूडेंट ने चैट में डाला था व्हाट इज रेस्ट एपीआई, रोहित भाई डाल रहा है। ओके, कोई आंसर दे पाएगा? एनीवन एबल टू गिव द आंसर व्हाट इज रेस्ट एपीआई? हाँ जी, रेज योर हैंड। बोलो बोलो बोलो। मैंने कुछ लिखा है, समझ में आया? आपके पास एक VM बन गया है, अगर VM बन गया है, VM के अंदर से फ्रॉम द इनसाइड द VM यू वांट टू क्रिएट अनदर VM, यू वांट टू क्रिएट a DB, यू वांट टू कनेक्ट टू द DB, देन यू विल कॉल द REST API, और वो चीज होगी। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आई? यस नो? So sorry to दिस interrupt. इज कॉल्ड, this is called REST API. Okay, means calling from one environment, one machine to another machine, that is called REST API. Okay, cool. एक और के मन में आ रहा होगा, सर ISC क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISC? किसी के मन में तो आ रहा होगा ना? यस, व्हाट इज ISC? Infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर, as a code. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, मीन्स योर इंफ्रा, मतलब अभी जो हम बना रहे हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, मतलब मैं एक VM बना रहा हूँ। ओके, क्रिएटेड विया कोड। अभी ये कमांड है दोस्त, ये जो है ना, ये कमांड लिखा है, दिस इज ए कमांड, ये कमांड है। ओके, ये कमांड कहता है जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस, दिस इज ए कमांड, और इसे कोड कहते हैं, ये कोड है। अंडरस्टूड? अरे यस नो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड कोड? कोड के अंदर हम लोग थोड़े से लॉजिक लिख सकते हैं। ओके, कमांड के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि इस तरह से रन करोगे तो ये चीज बनेगी। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इट, आई कॉपी द कोड, इस कोड को मैंने यहाँ पर, एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट क्लाउड शेल, आई क्लिक ऑन एक्टिवेट क्लाउड शेल। मैं बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इस चीजों को, बहुत सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट चीजें आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। आई ओपन द क्लाउड शेल, आई क्लिक ऑन अथोराइज, आई क्लिक ऑन अथोराइज, code is logic and condition, perfect, perfect. Okay, code can be customized, command cannot, command can be customized, but command can be customized with some limitation. Code can be customized as per the logic, कितने भी लॉजिक के साथ आप कोड को कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट गाइस, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या है ये? जस्ट रीड दिस एरर, व्हाट इज दिस एरर? एरर है, वार्निंग है, क्या है? बोलिए। Space issue. Space issue. सर Yes, sir. उसका Quota limit हार्ड डिस्क exceeded. यूसेज जो है वो Disk Equals space, it is मैक्सिमम है। telling around 98% disk disk space is usage. getting full. वार्निंग Okay, कोई वार्निंग बात नहीं, हम लोग इसको भी Warning. क्लीन करना सीखेंगे, यही तो हमारा काम है, दिस इज अवर वर्क, Right. करेक्ट?
राइट? ये हमें एक L1 की तरह वी हैव टू फिक्स दिस आल्सो। ओके, करेंगे अभी अपन। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई टुक ए कमांड, मैंने कमांड लिया, आई टुक द कमांड लिया, ओके, आई टुक द कमांड, मैंने इसको पेस्ट किया। ओके ओके, ये रहा मेरा कमांड। ओके, आई एम टेकिंग दिस कमांड, पूरे कमांड को कॉपी करा, ओके, एंड आई पेस्टेड हियर enter mama. Okay, as soon as I pressed it, what will happen? Guys, can you just guess it? How much time it will take to create a VM? कितना टाइम लगेगा एक मशीन बनाने के लिए? Seconds. Few microsecond. Rakesh is telling 3 minutes. 30 2 to 30 second to 1 minute. around 30 second to 1 around 30 second to 1 minute is a standard answer. Okay, and as soon as I run the command, I get an output. मुझे एक output मिल गया. Okay, this is the output came. Guys, and now I want everyone to read this out. इस output को एक बार read करो. Just read it. इसको read करो. And raise your hand. Who will able to explain me all the points? कौन सारे points explain करेगा मुझे? Raise your hand. Raise your hand. अभिषेक जी बोलिए. Yes. First line is the name, host name of the Machine machine. name is Rishabh. Machine name is Rishabh. Okay. Second line is the zone. Where is this located on the location? Machine is available into the US Central 1 zone. Okay. ठीक है. Then Third one is the machine type. What type of machine? machine type is this. Okay. ठीक है. Third one is third one is the internal IP address, private IP. This is the IP address, internal IP address, मतलब private IP address. Okay. Private IP. What is the use of private IP? बोलिए अभिषेक. Connecting internally within the environment. Within environment. It is not okay. it is, और yeah, अच्छा. it is Answer not is correct. available. Within environment. Within environment answer is correct. और better बोलिए. Speak up more better. Within a region. नहीं गलत. Locally we can access our environment. Wrong answer. Cannot access over the internet. हाँ. Privately. LAN network. It's isolated. Privately access over the internet. Wrong. अब चुप हो जाओ. ठीक है, अब मेरी बारी. Okay. Private IP means within a VPC. भाई आपको टेक्निकल आंसर देना है. Just think it in that way. एक ही नेटवर्क के अंदर एक्सेसिबल, दैट इज कॉल्ड, लेट अज्यूम आई हैव 5 VM, मेरे पास 5 VM है. ओके, मेरे पास 5 VM है, तो पांचों VM इंटरनली प्राइवेट आईपी, इंटरनल आईपी से दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. अगर सब एक ही नेटवर्क में रखेंगे, दे कैन एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी और इंटरनल आईपी. अंडरस्टूड? टाइप यू इनटू द चैट बॉक्स. So can we consider is as a MAC address like we have? बहुत अलग होता है, वो अलग है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. दैट इज वेरी डिफरेंट. Okay. Okay, perfect. Next, external IP, Public public IP. Okay, public IP. Okay, internet IP. Okay, internet पे accessible IP, public IP. Understood? मेरी बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes. है ना? Okay. Status, it is telling machine is in running condition. बस हो गया. ठीक है, ये पॉलिसी वगैरह को छोड़ दो, ऑलरेडी एग्जिस्ट पॉलिसी को बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. मशीन इज अप एंड रनिंग. कहाँ चेक कर सकते हैं? I can go into my computer engine. मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर रहा हूँ. I'm going to my computer engine and my machine will be supposed to be ready. Compute engine, and I came here. Okay. And as soon as I came to the VM instance, and my machine, Rishabh VM is ready. मेरी एक VM machine is ready. Okay. ये internal IP, external IP is visible here. Okay. That's it. Okay. Now what I'm doing it, ये मुझे इस machine को connect करना है. How many people never connected to any VM? कितने लोगों ने आज तक कनेक्ट नहीं किया? जस्ट टाइप नेवर इनटू द चैट बॉक्स. नेवर नेवर नेवर. अश्विन भाई ने नेवर, पूजा नेवर, माय गॉड, श्रीकांत ने नेवर, पल्लवी ने नेवर, प्रणय, रोहित भाई ने, ओके, केदार ने भी नेवर. ओके, देयर आर सो मेनी पीपल नेवर कनेक्टेड टू द VM. Okay, guys, listen it very carefully. Okay, if you want to connect to the VM, you have to select the VM. आपको VM को select करना होगा, and there is a option on the 3 dot. Okay, यहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ गया? अरे यार, कहाँ गया भाई? कनेक्ट ऑप्शन कहाँ गया? ये कहाँ गया? कनेक्ट ऑप्शन वहीं पे है सर, लास्ट में. कनेक्ट हाँ? SSH. Sir, SSH. करेक्ट. ओके, AWS के अंदर आप यहाँ पे AWS के अंदर यहाँ पे आप कनेक्ट ऑप्शन ढूंढते हो, यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन है ही नहीं. देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड SSH. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH? सिक्योर शेल कनेक्टिविटी. ओके, आप इस मशीन को सिक्योरिटी शेल से कनेक्ट करोगे. ओके, नाउ गाइस सी इट हियर, सी माय स्क्रीन, मेरी स्क्रीन देखिए. ओके, आई क्लिक ऑन SSH. मैंने जैसे ही क्लिक ऑन SSH करा, ओके, one terminal, one pop-up has been open in front of me.
keys are getting transferred. मेरी public key, private keys, automatically things are getting transferred. My keys are getting transferred. Keys are validating, verifying it. Authentication, authorization हो रहा है मेरे accounts का. Okay. And then connection is going to get established. And from the port number 22, I have landed into the VM. मैं VM के अंदर land कर गया. ओके चेतन पूछ रहे व्हाट इज कीज मैं सिखाऊंगा पब्लिक की प्राइवेट कीज होती हैं आई विल टीच इट ओके गाइस आई एम कनेक्टिंग अगेन मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं आई एम जस्ट क्लोजिंग इट मैंने इसे क्लोज किया आई सिलेक्ट द वीएम और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एसएसएच एज सून एज आई क्लिक ऑन एसएसएच माय पब्लिक की प्राइवेट कीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फॉर प्राइवेट ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए ओके फेल हो गया गाइस अब क्या हुआ यहाँ पर ये बताओ फेल हो गया व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग कि कीज आर अनेबल टू ट्रांसफर की ट्रांसफर नहीं हुई मैंने बहुत जल्दी में क्लोज कर दिया था राइट तो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट आई एम जस्ट क्लोजिंग इट अगेन मैंने इसे क्लोज कर दिया एक बार पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन एसएसएच जैसे ही मैंने एसएसएच पे क्लिक किया वापस माय कीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम माय वीएम ओके फ्रॉम माय एनवायरनमेंट ओके फ्रॉम माय एनवायरनमेंट कीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड keys are getting verified validated authorization will happen and with the port number 22 I will land it into the machine okay by point number important point number port number 22 I will land it into the machine okay मैं VM के अंदर आ गया okay प्लीज आप लोग अपनी कंपनी में कैसे कनेक्ट करते हो VM को can you just write into the chat box how you are connecting your VMs putty yes putty yes RDP Omkar is writing RDP मतलब Windows you are using the Windows servers okay पुट्टी इज द मेन ऑप्शन या गिट बैश ओके परफेक्ट ठीक है अब यहाँ पर एट दिस पॉइंट गाइस सी दिस इज माय यूजर ये मेरा यूजर है दिस इज मशीन नेम okay and I want to know what exactly the configuration of this machine so first I will become the root user okay I will become a root user I just type sudo hyphen I and I become the root user मैं root user बन गया एक बंदा पूछा है व्हाट इज पोर्ट नंबर 22 धीरज धीरज पोर्ट नंबर 22 मतलब जिस गेट से एंट्री मिलती है टू द वीएम दैट इज पोर्ट नंबर 22 ओके पोर्ट नंबर 22 से हम मशीन के अंदर जाते हैं दैट्स इट गाइस इफ यू नो द आंसर चैट में यू कैन राइट द आंसर प्लीज रिस्पॉन्ड इट टू द चैट आप लोग चैट में आंसर दे सकते हो ओके उत्कर्ष मैं सिखाऊंगा ये लाइनेक्स सिखाऊंगा आई विल टीच लाइनेक्स अभी मैं लाइनेक्स नहीं सिखा रहा मैं सिखाऊंगा ओके है ना कूल नो वरीज ओके तो आई बिकम अ रूट यूजर नाउ आई बिकम अ रूट यूजर इज वेरी फर्स्ट कमांड एज ए होमवर्क फॉर टुडे व्हाट यू कैन डू इट यू कैन गो टू योर कंपनी आपकी कंपनी के मशीन में लॉग इन करोगे और एक कमांड रन करोगे यू नेम हाइफन ए ओके उससे क्या होगा यू विल गेट टू नो कि आपकी मशीन कौन सी है ओके व्हाट एग्जैक्टली योर मशीन इज ओके योर मशीन इज लाइनेक्स ओके ये लाइनेक्स की मशीन है द नेम ऑफ द मशीन इज रिसर्व इट इज अवेलेबल इन सेंट्रल यूएस ये रहा और वर्जन 24.4 उबंटू वर्जन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज गेटिंग अंडरस्टूड आप लोग अपनी कंपनी में जाके ये कमांड रन कर सकते हो सो दैट व्हाट हैपन यू विल गेट टू नो अबाउट योर मशीन एक और क्वेश्चन गाइस राइट द कमांड टू चेक द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेवर एक कमांड लिख के दीजिए मुझे जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर मिले हाँ जी राइट द कमांड विकास एंड गलत हो रहा है थोड़ा सा कैट ईटीसी थोड़ा सा सही है अमोल थोड़ा सा गलत हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज के बारे में यस सागर पीएस हैज गिवन द करेक्ट आंसर गाइस ओके कैट व्हाट डू यू मीन बाय कैट कैट इज फॉर रीडिंग ए फाइल ओके कौन सी फाइल को हम कर रहे हैं ईटीसी फोल्डर के अंदर गए ओके वहां पे ओएस रिलीज करके एक फाइल थी ओएस रिलीज एंड आई क्लिक ऑन एंटर मैं जैसे एंटर करूंगा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मुझे पूरा पता चल गया अंडरस्टूड यस नो ओके मैं आज आपको सिर्फ 5 लाइनेक्स के बेसिक कमांड्स जस्ट 5 लाइनेक्स बेसिक कमांड्स ओके पहला कमांड मैंने रन किया था sudo hyphen I sudo hyphen I so that I become a root user you name hyphen A so that what happen at least आपको ये पता चल गया कि मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा cat hyphen etc hyphen os release release ओके ये नाम मारा मैंने अब यहाँ पे ओके अब यहाँ पे मैं 2 कमांड और मार रहा हूँ मुझे अपने इस मशीन की CPU memory I want to know about the CPU memory of this machine what is the command top okay top okay with the help of top command what will happen the task manager of the Linux machine will be open
Okay, and I get to know ये machine का time है 8 minutes ago this machine has been created, 2 users has been logged in, and some information about my machine. Okay, this much CPU is getting used, this much memory or users are getting used. Okay, तो top command primarily, top command के बाद यहाँ पे हम लोग क्यू मार के इसके बाहर आ जाते हैं. Okay, and with the top command I can say I will get the compute resources above. Okay, second फ्री. ओके, विद द फ्री कमांड मैं यहाँ पे एक फ्री कमांड रन कर रहा हूँ. ओके, फ्री कमांड से मुझे मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई, कितनी मेमोरी गेटिंग यूज. बट एट दिस पॉइंट विद द फ्री कमांड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आई एम जस्ट टाइपिंग फ्री हाइफन एच. ओके, सो एच से क्या होगा गाइस, कैन एनीवन हेल्प मी आउट, व्हाट विल हैपन विद द एच कमांड? Human It will readable. convert into gigabyte. एच बिलोंग टू ह्यूमन रीडेबल. ओके, आंसर वॉज सेम, दोनों आंसर सेम है. फ्री में भी आंसर आ रहा था, एच में भी आ रहा था. एच में ऑल्सो कमिंग, बट एच इज ह्यूमन रीडेबल, इट इज टेलिंग 3.8 GB इज द total. Okay, 572 is getting used, 2.2 GB is free, so like that information is coming, h belong to human readable. Okay, same thing, same thing we can use for df disk space के लिए df hyphen h. Okay, df hyphen h, and what will happen, मेरे machine का disk space की related information will be visible. These are the 5 command, 6 command है. आप अपनी कंपनी में आज रन करके यू विल गेदर द इंफॉर्मेशन कि आपकी मशीन कंपनीज में कौन से सर्वर यूज हो रहे हैं. यस नो, कैन यू सेंड दिस स्क्रीनशॉट्स? यस नो, चलेगा मेरी? यस नो, यस नो. ओके, एटलीस्ट गेदर अबाउट योर कंपनी इंफॉर्मेशन. ओके, सो दैट व्हाट हैपन, आपको थोड़ा सीखने, आपको पता रहेगा इन द इंटरव्यू व्हाट विल हैपन. इफ आई हैव नो कंपनी, भाई जो अगर दीपक वर्मा बोल रहा है आपके पास कंपनी नहीं, भाई मेरी कंपनी ये ले लो, ये जो है ना, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर यू. अंडरस्टूड? ठीक है, इफ यू आर नॉट वर्किंग नो वरीज, इफ यू आर ए नॉन टेक पर्सन, आपके पास लाइनेक्स का सर्वर ही नहीं, एक्सेस नहीं है, नो वरीज, दिस इज योर मशीन इन्वायरमेंट. ओके, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए है. ठीक है, cool. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग हियर, मैं लेता हूँ आपके बाकी क्वेश्चंस. ओके, नाउ प्लीज व्हाट आई डिड, मैंने अभी एक वीएम बनाया इनडायरेक्टली. सिर्फ वीएम बनाना मतलब, वीएम मतलब IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मैंने यहाँ. ओके, अब यहाँ पे IaaS बन गया. ओके, लेट्स गो टू द स्टेप 1, स्टेप 2. आई केम हियर. मैंने यहाँ पे अभी एक वीएम बनाया गूगल क्लाउड में. एक वीएम बनाने के बहुत सारे तरीकों से मैंने आपको बताया है गाइस. ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, डू फील लाइक इट्स अ लॉन्ग? लेंदी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है? यस, और मैनेजेबल है? नो, राइट? नो, वी हैव टू थिंक अबाउट डीपली, हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इफ यू विल सी टुडे, अगर आज देखोगे तो आप, तो कल आप कर पाओगे. ओके, कूल, थैंक यू. अब नेक्स्ट कमांड है इंस्टॉल डॉकर. डॉकर इंस्टॉल करने के भी दो तरीके हैं. कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद द 2 ways? बोलिए, दो तरीके क्या है? Docker Hub. हाँ जी, बोलो बोलो, गो इट. हाँ सुमन, गो इट. So graphical user interface and command line. भाई लाइनक्स की मशीन है तो जीयूआई तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया. Yeah. इतनी आसानी से रिजेक्ट हो गया. यस, देखो अब यहाँ पे हमारे पास है एपीटी कमांड. एपीटी कमांड ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग अप्रोच. इस हर चीज को करने के 2-3 तरीके होंगे. ओके, एपीटी इंस्टॉल डॉकर डॉट आई. चलो, लेट अज्यूम आई वेंट हियर, मैं यहाँ पे आया. ओके, मैंने सिर्फ डॉकर की स्पेलिंग टाइप ये की. डॉकर. खाना करो. Okay, I just type Docker. Okay, as soon as I type Docker, here I found कि Docker not found, Docker available नहीं. And Linux is very smart. He given the command to me. आप ये command run करोगे and Docker will be installed. Okay, then I am taking this command into my notepad. भाई Docker install करने का, this is the command Linux is given me automatically. Understood? मेरी बात समझ में? Yes, no, yes, no, yes, no. Okay, but I want to follow the best practice. मैं कुछ best practice follow करना चाहूंगा. So I will run the command apt hyphen get update. Okay, as soon as you are an engineer, as soon as you create any of the machine, first your responsibility, you have to follow the best practice and update all the packages into the VM. Understood? Yes, no, मेरी बात समझ में आई? Okay, so what I'm doing it, UP स्पेलिंग गलत हो रही है, UPDAT अपडेट. ओके, इस ये हो गया कमांड जूनियर इंजीनियर का. जूनियर. ओके, जो लोग JUNIOR जूनियर इंजीनियर, अगर आप 5 लाख 10 लाख तक टास्क कर रहे हो तो आपको ये कमांड आनी चाहिए. अब इस कमांड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके, थोड़ा सा बेटर करके देगा कोई मुझे? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? ऑप्टिमाइज करके देगा इसको?
इज बोथ आर डिफरेंट और सेम? बताओ, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर, सेम। सेम है, यस 100% सेम है। सेम है बट Okay? एक लाइन पे कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज हो गया है। आई डोंट हैव टू रन टू कमांड्स, इट विल बी रन वन कमांड। ओके, और हियर आई कैन से हाइफन y so that it will not ask the prompt with me. चलो, what I'm doing it, I'm just running this command. बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई एम इंस्टॉलिंग द डॉकर। फर्स्ट आई एम अपडेटिंग ऑल द पैकेजेस ऑफ द VM. My packages, whatever the current softwares or applications are there, it will get updated. Yes, packages are updated. Okay, then I'm running this command apt install docker.io. Okay, and docker will be installed in my VM. Okay, it is asking 279 MB additional space will be there. I'm telling yes, and I press enter, and my VM will and Docker will be installed in my VM. Okay. अब यहाँ पे Docker install होने के बाद I'm coming to my PPT again. Okay, अपने PPT पे again आया, and in my PPT it is written डाउनलोड द वेबसाइट। मैं ये वाले अप्रोच को कर लेता हूँ। ओके, कोड वगैरह से कर लेते हैं। ओके, मैं अब यहाँ से आज एक कंटेनर रन कर देता हूँ। कंटेनर विथ वेबसाइट या कंटेनर विथ एप्लीकेशन। ओके, वेबसाइट तो मैं आज एक एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। मेक सेंस? यस नो? ओके, और हम लोग आईपी पे जाके चेक कर लेंगे, इट विल वर्क। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने पीपीटी में गया। ओके, ये वाली अप्रोच को मैं कर लेता हूँ, थोड़ी सी लेंथी है, कल मजा आएगा। ओके, एंड टुडे आई एम टेकिंग डायरेक्टली विंडोज 11 का एम्यूलेटर है। दिस इज विंडोज 11 एम्यूलेटर विच विल रन विद द डॉकर। डॉकर के एक कमांड से मेरा पूरा विंडोज 11 का VM रन हो। ओके, आई एम डूइंग इट। ओके, बट बिफोर डूइंग आई एम गोइंग इनटू दिस प्लेस। ओके, एज दिस विल रन इन पोर्ट नंबर 3000। ओके, ये 3000 पोर्ट पे चलेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग इनटू माय VM। ओके, मैं अपने VM पे गया। आई एम गोइंग टू माय VM। दिस इज द IP, ये मेरी IP है अभी VM की डबल कॉलम। इसको मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, ऑन द पोर्ट नंबर 3000 it is working or not working. Okay, I just check it like this. Yes, nothing is working. Okay, can you also check it, it is working or not working? Can you check it? Anything is coming? Check it, check it, check it. No, it is not working. Okay, perfect. Okay, so what I'm doing it, I'm going here, I'm just taking one command, make command ले रहा हूँ। Okay, मैं command ले रहा हूँ and I put it here. I executed this, and then after that I'm running this. This just give me the permission to execute this command, and then I will explain you this code. Can I have your permission? Run करके देखें। Okay, I'm just taking this command, okay, and I'm executing here. Okay, I'm executing here. Okay, and as soon as I will press enter, जैसे ही मैंने enter press करा, what exactly is happening? He is downloading the image, he is pulling the image, he is extracting the image because Docker will run the container. Okay, और image को pull करके container में डालना। यहाँ पर something happen. Can anyone knows any Docker command how to check it is working or not working? सर डॉकर PS हाइफन है। Docker PS, बस आपने बोला Docker PS, Docker will check the running processes, and it is telling from the 19 seconds something is working. Can you go into the UI? It is working. Can you check it? I given the IP address some couple of seconds back. Refresh it. Yes, सर कैन it's यू working. सर कैन यू शेयर द कमांड? Yeah, अरे it मैं is पूरा working. कमांड समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा समझाऊंगा अभी, ठीक है गाइस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जस्ट चेक इट, एनीथिंग इज वर्किंग। माय गॉड, यस भाई, पूरा विंडोज 11 का एमुलेटर इज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ यू। गॉट इट? यस सर, सर प्लीज शेयर द कमांड, आई जस्ट वांट टू चेक वन। संदीप भाई, ये लीजिए कमांड। ओके, पहले कम संदीप भाई प्लीज एक्सप्लेन मी दिस कमांड, उसके बाद रन करना। गाइस ओके संदीप ओके, भाई श्योर प्लीज। श्योर 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 श्योर। Guys, Sandeep is trying. Guys, we will understand this command and then I will give this command to you. Okay, Sandeep ji, please try to ओके explain me सो क्या क्या लिखा है इसके अंदर। Okay, यस यस, slowly, one second, सो one second, one second, one second, मैं आपके लिए easy कर देता हूँ। Okay, I made it easy. Guys, कितना लोगों को ये कमांड समझ में आ गया? How many people understood? Type you into the chat box. ये कमांड समझ में आ गया है? नहीं आया, बहुत से लोग को नहीं आया। ठीक है, पूजा जी को नहीं आया है। ओके, नहीं आया, चलो। ओके, गुड। संदीप, प्लीज एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट विल हैपन। डॉकर विल रन। yes, Docker will run. So with the Docker run command, we will just converting the image to a container. So with the pulling the image आराम from से the संदीप, 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 आराम से। डॉकर विल रन दिस इमेज, मतलब ये इमेज, दिस इमेज विल बी DOWN डाउनलोडेड एंड कन्वर्ट into a container. टू कंटेनर। ओके,
ओके कंटेनर, वही सिर्फ ये रन कमांड लिखा है ना, इससे कंटेनर बन जाएगा। ओके CONTAINER, ये जो मैंने दो हाईलाइट किए, डॉकर रन और ये वाली इमेज का नाम, तो इससे कंटेनर रन हो गया। अंडरस्टूड गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड? टाइप इनटू द चैट बॉक्स। ओके ठीक है, उसके बाद -D, With the hyphen D, it will run as a detach mode in the backend. detach mode मतलब बैकग्राउंड में। ओके इट विल रन इन बैकग्राउंड, इट विल नॉट, लॉग्स विल नॉट बी इन अपफ्रंट, लॉग्स बाहर नहीं दिखेंगे, बैकग्राउंड में चलेगा। परफेक्ट ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर दिस, Line number name, that will be the VM name. So the container name. इट कैन बी द VM नेम, वर्चुअल जो हमने कंटेनर बनाया है, कंटेनर का नेम, दिस इज द नेम ऑफ द कंटेनर। आप इसे चेंज कर सकते हो, आंसर इज यस, यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड गाइस, मेरे 4 डॉट समझ में आ गए, 4 डॉट्स, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, yes. Okay, cool. Line number this, what will happen? This is a port mapping of a VM with the container. First, क्या बात है भाई, भाई यहाँ पे -P बिलोंग टू द पोर्ट मैपिंग। कैसे पोर्ट मैपिंग है? वीएम का पोर्ट, वीएम का जो पोर्ट है 3000, ओके, मैप विथ कंटेनर पोर्ट, ओके, कंटेनर के 3000 पोर्ट से, क्योंकि रियल टाइम, इन द रियल टाइम एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन कंटेनर, पर दिख तो वर्चुअल मशीन पर रही है। गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में? यस नो? अरे यस नो, यस नो? yes, sir. एक्चुअल में एप्लीकेशन तो कंटेनर के अंदर चली, but because how it is visible on the virtual machine IP, because it has been mapped with the help of this keyword, इस कीवर्ड से मैप हो गई है। परफेक्ट, लास्ट कीवर्ड बोलिए जी। Sir, it's a restart command. So whenever if the VM, suppose we shut down the VM or the container got exited, if we executing that command, so whenever we again restart that particular container, it will again start it. What up करिए, आप what up करिए। Let assume in this container is, if this 3000 port, if it is running, hundreds of thousands of requests are came, okay, if this request, more request came, container heavy load हुआ, okay, वो restart automatic हो जाएगा, no need to do it again, okay, it will be restarted automatically। मतलब आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, कंटेनर फॉल भी हुआ तो इट विल रिक्रिएट अगेन। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आई गाइस? Yes. कितने लोगों को ये कमांड समझ में आ गया? जस्ट टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स, मी इनटू द चैट बॉक्स, ये 100% समझ में आ गया हो तो ओके परफेक्ट। नाउ एक बंदे को कमांड चाहिए था, आई एम गिविंग टू ऑल गाइस, आई एम गिविंग दिस कमांड टू ऑल, ये कमांड आप ले सकते हो। ओके, नो नीड टू डू द प्रैक्टिकल, बट अगर किसी ने कर लिया तो जस्ट शो मी। मुझे लग रहा है संदीप ने कर लिया है, Yes, डॉक्टर yes, इंस्टॉल कर लिया है। आई वाज फीलिंग ओके कूल गाइस, यू अंडरस्टूड? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी हमने क्या करा? ओके जस्ट सी दिस, व्हाई आई एम टीचिंग दिस ऑल थिंग्स। मैं यहाँ पे गया, इसको आई एम राइटिंग इन ए डिफरेंट वे, आई एम राइटिंग इन ए डिफरेंट वे। VM प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। ये बात समझ में आई? यस नो? provided IaaS provided by PROVID provided by GCP ने हमें ये प्रोवाइड कर दी। ओके, VM प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डॉकर बना दिया, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ओके, बाय डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे आप कंटेनर चलाओ, कुछ भी चलाओ, दैट इज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आई? यस नो, यस नो? Who will repeat? कौन रिपीट करेगा? बोलिए जी, who will repeat? कौन रिपीट करेगा? And raise your hand, raise your hand, okay, raise your hand। चेतन, हाँ जी चेतन, जो मैंने बोला वही एक्सप्लेन करना, उससे ज्यादा इधर उधर का नहीं, ठीक है? गो अहेड। आपने GCP लॉगिन करके VM क्रिएट किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर English, if possible in English, because आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, it's possible in English, yes? You created a VM with the help of GCP. It is called as IaaS, infrastructure as a service. Then you installed Docker. First, you update the all software in the VM machine with the command update, ATP update. Then you installed a Docker in that VM machine. It is a PaaS, there's a platform as a service, and then you connect the one image which converted in the you connect the Windows image with the help of Docker to the VM, and we call it from VM machine with help of port number 3000.
एज ए एंड यूजर यू गेट ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। भाई आपको अगर ये सब नहीं आता है तो यू विल टेल कि हाँ इट्स वन एप्लीकेशन फॉर यू, करेक्ट? आप तो यही बोलोगे, एग्री? Yes. यस और नो? यू विल से वन एप्लीकेशन, परफेक्ट। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आई क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म, नाउ आई कैन रन एनी डॉकराइज एप्लीकेशन, में कोई सी भी एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ। यस नो? दैट्स इट। ओके Yes. गाइस, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। कल हम लोग थोड़ा और डीपली देखेंगे। ओके इसी के अंदर जाएंगे। ओके व्हाट एग्जैक्टली आई एस पी एस 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 उसके अंदर और जाएंगे। अगर आप सिर्फ पीजी की तरह रेडीमेड देखना चाहते हो तो डेट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आपको रेडीमेड मिल जाता है। ओके अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जाते हो, सेमी फर्निश हाउस, ओके जिसके अंदर रेडीमेड कुछ कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, यू कैन गो एंड स्टे डायरेक्टली। और अनफर्निश्ड फ्लैट लेते हो तो आपको पूरा कस्टमाइज करना पड़ता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने आईएस लिया, उसके अंदर डॉकर इंस्टॉल किया तो पीएस बन गया। ओके उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस वी कैन रन इट। आज मैंने एक एप्लीकेशन रखी, कल हम लोग एक आध और एप्लीकेशन रन कर देंगे। अंडरस्टूड? फ्लो समझ में आ रहा है? यस नो? राइट। अब यहाँ पे मेरे को बताओ विच वन इज बेस्ट, मतलब अपने आपको अगर कंपनी को कस्टमाइज करना होता है तो विच वन कंपनी चूज, कौन सा चूज करना चाहिए? IAS. Companies are using this IAS, IAS, yes. 70% सर्विसेज यू आर यूजिंग IAS। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर देते हो। आप लोग भी अनफर्निश्ड ही लेते हो ना घर, उसके बाद अपने हिसाब से अपनी टीवी, अपना अपना पलंग, अपनी फ्रिज, यू विल चूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? सेम थिंग। ओके लाइक एन एग्जांपल, ओके गूगल ड्राइव यू कैन पुट एनीथिंग एज पर योर नीड। ओके और वर्चुअल मशीन, आप एक वर्चुअल मशीन है, यू कैन पुट एज पर योर नीड। ओके पास के अंदर कुछ सर्विस के नाम जैसे डेटाबेस, GKE, okay, Google Kubernetes Engine, GKE, databases like RDS. No need to install MySQL. MySQL will be installed automatically. Just come up with your data and use it. Getting my point? Or some SQS monitoring services. Directly you can use it. No need to customize anything. You cannot customize anything. Directly use it. That is called software as a service. कितने परसेंट समझ में आ रहा है guys? Tell me. How much percentage you are able to understand? समित को 100% आया। ओके आनंद भाई को 100%, देवेंद्र भाई को 100%। गाइस जनरेट द समरी, एक समरी जनरेट करिए विद डेफिनेशंस। ओके डेफिनेशंस के साथ जनरेट करिए प्लीज। ओके एंड सेंड इट इनटू योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके आफ्टर जनरेटिंग द समरी प्लीज अपने आप से बोलिए। ओके आई विल गिव 1 मिनट टाइम। Okay, I will give 1 minute time. Please generate the summary quickly. There is a blue color icon is there. Guys, blue color icon is there on your Zoom. सब एक ही जैसा नहीं, सबको समरी नहीं जनरेट, किसी को इंटरव्यूज का क्वेश्चन जनरेट करना है, किसी को सिनेरियोस जनरेट करना है, किसी को पॉइंट टू पॉइंट जनरेट करना है। ओके पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स, वन लाइन डेफिनेशंस, आप लोग वन लाइन डेफिनेशंस जनरेट करिए। ओके विद द हेल्प ऑफ एआई एंड पोस्ट इट इनटू योर व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। और उसको रीड करना है आप, ठीक है? यस आई एम वेटिंग इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। अरे यहाँ पे नहीं पीयूष भाई, यहाँ पे नहीं, एक वो ब्लू कलर का जो आइकन आ रहा है ना, उस ब्लू कलर के आइकन पे क्लिक करके। आई एम जस्ट चेकिंग इन व्हाट्सएप, यहाँ पे देखते हैं, कंटिन्यू। हर्ष भाई की कोई समरी आई है, परफेक्ट। ओके हर्ष भाई परफेक्ट। आईएस मोस्ट कस्टमाइजेबल इंफ्रा ओनली प्रोवाइडेड, क्या बात है। पीएस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड, इंस्टॉल ऐप ऑन टॉप, सेस रेडीमेड थिंग। समीर भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके करते हैं इसको, देखते हैं। ओके guys, others, please write your summary. Please write your summary. Okay session summary. Okay key scenarios. Okay launch the VM। ये देखो एक बंदे ने सिनेरियो वाइज कर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर। ओके पॉइंट टू पॉइंट, एक बंदा पॉइंट टू पॉइंट जनरेट कर दिए। हाँ ये एक बंदे ने पॉइंट टू पॉइंट भी जनरेट कर दिया, नाइस। ओके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरेट कर दिए, आंसर्स जनरेट कर दीजिए। ओके मंथली लिमिट रीच हो गई तो आप ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। ओके ओके परफेक्ट। ओके बस दैट्स इट, बस आप रुक जाओ गाइस, आप रुक जाओ, आ गई जितनी आनी थी आ गई, समरी आ गई है। ओके नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉट एवर यू लर्न, आपने आज जो सीखा है, ओके यू हैव टू स्पीक इन जस्ट 1 मिनट। एवरीवन रिकॉर्ड इट प्लीज, यहाँ पे रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड इट। आई एम गिविंग ए 2 मिनट टाइम, 1 मिनट तक आपको बोलना है, रोज 1 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टूड गाइस? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या क्वेश्चन, मैंने आपको क्या टास्क दिया है? व्हाट इज द टास्क? every day 1 minute you have to speak। okay बोलिए 1 मिनट। guys no need to write summary, आपको अब समरी लिखने की जरूरत नहीं है। no need to write any summary। ओके हो गई, आ गई समरी, आ गई है, आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके guys राइट, अब यहाँ पर स्पीक अप, रिकॉर्ड इट प्लीज एवरीवन, रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड इट। यू हैव ए 1 मिनट टाइम, स्पीक अप, बोलिए।
उत्कर्ष स्पीक, राकेश भाई स्पीक, देवेंद्र भाई, सब लोग स्पीक बोलिए अपने फोन में इन द व्हाट्सएप ग्रुप। Guys, time is up. 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 Okay. Guys, how was your experience? समझ में आया? Yes, no? बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे? Unmute yourself. अब यहाँ पे बोलिए. Unmute yourself. Yeah. Yes. Yes. Technical Yes. terms we are able to speak up. थोड़ा सा, right? 1%. थोड़ा सा Guys, थोड़ा every सा day we have to improve. Every day we have to improve 1%. Correct? Yes. Yes, no? राइट Yes. राइट सर Right? और आज से guys from today onwards I want to see your post on the LinkedIn. आप अपने LinkedIn को भी ऑप्टिमाइज करिए. ओके, 2 आर्टिकल बनाइए. व्हाट एग्जैक्टली द डेटा सेंटर, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ डेटा सेंटर. विद द हेल्प ऑफ एआई आप जनरेट कर सकते हो, या मेरे पीपीटी के नोट्स से आप स्क्रीनशॉट लेकर यू कैन पोस्ट इट इनटू द लिंक्डइन. अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर 1. ओके, डेटा सेंटर के बारे में. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, जो हमने प्रैक्टिकल किया है. जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट प्रैक्टिकल. आप अपनी स्टेप्स में लिखिए विद द हेल्प ऑफ एआई एंड पोस्ट इट इनटू द लिंक्डइन. आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. गॉट इट? उसको समझ में आ जाए कि आप क्लाउड में आ गए हो, आपकी जॉब क्लाउड में लग गई है, लिंक्डइन को समझ में आ जाएगा. ओके, तो ही विल रीच आउट टू द क्लाउड पीपुल. ओके, और क्लाउड के एचआर तक जाने लगेगा थोड़े दिन बाद आपका लिंक्डइन. गॉट इट? जिससे मैं, हाउ कैन आई रीच टू यू, मैं आप तक कैसे पहुंचा? बिकॉज मेरी प्रोफाइल आप जो ढूंढ रहे थे वैसी थी. एग्री या सुनो? गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरा यस लिंक्डइन का पोस्ट दिखा होगा, इंस्टा का पोस्ट दिखा होगा. क्यों दिखा होगा? आपका वो इंटरेस्ट था, मेरे को वो आपको बताना था. करेक्ट? तो आप वो चीज बताओगे अब टू द एचआर. आपको किसी एंड यूजर को नहीं बताना, आपको एचआर को बताना है. तो यू हैव टू राइट इनटू द लिंक्डइन कि आप ये सब कर रहे हो. दिस इज द डे 2 ऑफ लर्निंग. कुछ भी एक अपनी पूरी एक स्टोरी टाइप से बनाकर पोस्टेड इनटू लिंक्डइन सो दैट आपकी चीजें स्टार्ट होंगी. गॉट इट? और एवरीडे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनम्यूट करके बोलना है, रिकॉर्ड करना है. बिकॉज वेनसडे को, इस वेनसडे नहीं, नेक्स्ट वेनसडे को मैं आपका एक इंटरव्यू लूंगा. जो आपने अभी एक एक मिनट जो रोज सीखोगे ना, 10 मिनट्स का आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. एग्री? अब मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था पहले से. ठीक है? जो आप एक एक मिनट कर रहे हो, ये एक एक मिनट को कंबाइन करके यू विल गिव ए 10 मिनट्स इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपना नाम बोलोगे, अपने लाइनेस के बारे में बोलोगे, क्लाउड के बारे में बोलोगे, डेटा सेंटर्स के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स बोलोगे, डे टू डे एक्टिविटीज. हो गया आपका 10 मिनट का एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन. फिर हमें क्या करना है? उसको क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं. अंडरस्टूड? और आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी. गॉट इट? यस, नो? हाउस द आइडिया? हाउस द आइडिया? हाउस द आइडिया? कुलजीत जी कैसा यस है? यस राकेश भाई, एवरीवन ग्रेट गुड? ओके, कैन आई टेक योर 1 लाइन फीडबैक? मैं आपका 1 लाइन का फीडबैक ले सकता हूँ. हाउ वाज द टुडेज सेशन? ओके गाइस, एवरीवन कम अप ऑन द कैमरा. आई वांट एवरीवन ऑन द कैमरा. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. Sir, very amazing and interactive session today, sir. एवरीवन पहले कैमरे पे आओ, पहले कैमरे पे आओ, फर्स्ट कैमरे पे, फर्स्ट कैमरे पे एवरीवन. ओके, एंड ओके, गुड. Session was very informative.
अरे मैंने तो अभी पूछा ही नहीं। How was the day 2 session? कैसा था guys day 2 का Yes, session sir. आज का? हमने Everyone. से Very Yes, sir. Very, informative. very Very, Very informative. informative. Session, sir. It was the very Informative. Was very much Good session, informative. and we learn समझ about में आ रहा है? Very Everyone. good. Yes, So yes. yeah, Yes. We learned so many things today, how to create a virtual Yeah, it's machine. excellent, sir. well. Excellent. Firstly, we किसी का understood clever. why It's exactly very the cloud amazing, is sir. being used. Why Yes. exactly the cloud is getting used, right? Cloud picture में क्यों आया? क्या problem थी? Okay, how easy things become, right? Yes or no? Why और And आज हमने we and how started to I AI. understand understand. ki I how and why. understand the main difference between IaaS, PaaS, and SaaS today. करेक्ट आईएएस पीएस एसएस के बारे में पता चला प्रैक्टिकली करेक्ट यस और नो How can we host प्रैक्टिकल भी करके application देख लिया inside the गाइस container? अब आपको अच्छा सी यू हैव एवरीथिंग आपको पूरा समझ में आएगा आपको प्रैक्टिकल करने में कितनी देर लगेगी आप बताओ कितनी देर लगेगी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कितनी देर Let's say लगेगी 5 minutes. minutes. 5 Hardly minutes. 2 to 5 5 to minutes. 15 minutes. देखो देखो समझने में प्रॉब्लम होती है अगर समझ में आ जाता है तो 5 मिनट का ही होता है करेक्ट जस्ट वन कमांड आपकी पूरी एप्लीकेशन रन हो गई एग्री यस और नो Yes, sir. यस फ्रॉम आफ्टर 2 days ओके हम लोग गूगल क्लाउड का काम अभी हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए आपको सब समझ में आएगा तो आप प्रैक्टिकल फटाफट करोगे मेरे साथ रेडी एक्सेप्ट दिस चैलेंज yes, Yes, sir. Accepted, sir. yes, sir. everyone Accepted, sir. Accepted, sir. perfect thank you okay and this is the day 2 feedback चैट में भी देख लेते हैं क्या लिखा बच्चों ने चैट में यार लिखा है सुपर ग्रेट परफेक्ट एक्सीलेंट ग्रेट वी लर्न थिंग्स बट न्यूली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट थैंक फॉर द वंडरफुल सेशन एक बंदे ने लिखा अभिनव भाई ने ओके थैंक यू थैंक्स अ लॉट गाइस ओके कूल एंड गाइस जिनको ऑफिस जाना है यू कैन गो टू ऑफिस थोड़ी सी क्लासेस लंबी हो गई है गो टू द ऑफिस ओके जिसको जाना है और whoever has a question जिसके पास भी क्वेश्चन है फर्स्ट आई एम स्टॉपिंग द स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब मैं यूट्यूब से स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहा हूँ ओके एंड गाइस whoever is still not in my WhatsApp group अगर आप ये रिकॉर्डिंग WhatsApp ग्रुप में देखते हो अगर आप मेरे WhatsApp ग्रुप में नहीं हो ओके तो व्हाट आई एम डूइंग इट मैं आपके लिए एक बारकोड रखा है मैंने ओके यू कैन जस्ट स्कैन दिस बारकोड ओके और आप मेरे WhatsApp ग्रुप में आ सकते हो ओके एनीवन स्पेशली फॉर यूट्यूब आप लोग के लिए नहीं है जो जूम पर ऑलरेडी उनके लिए नहीं है ओके आपको मेरा जूम लिंक ऑलरेडी जिनको नहीं मिला है दैट इज ओनली फॉर देम ओके आप इसको स्कैन करके यू कैन कम टू माय व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द एडमिन या मेरे एक दो जूम सेशन में पढ़ के यू कैन कनेक्ट विद मी और यू कैन कम टू माय लक्स बैच बिकॉज दिस इज अ लक्स बैच वी आर लर्निंग फॉर द 55 days फॉर द बेटर पैकेज हाई पैकेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ओके